हेलो माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। मानो तुम अपने स्पीकर हेलो, माइक टेस्टिंग। अली भैया आपको आवाज आ रही है? ये आवाज ब्रेक हो गया ना। आपके पास सिग्नल कम आ रहे होंगे ना, इस वजह से। स्पीड आ रही है अभी भी आपका जी ठीक है, हमारी आवाज आ रही है आपको? हाँ माइक में ही हूँ मैं। हेलो, आपको आवाज नहीं आ रही? हेलो, आवाज नहीं आ रही? सुना तो ये आवाज नहीं आ रहा। माइक सेलेक्ट कर जरा, चेक कर जरा माइक की सेटिंग चेक कर। जी जी इमरान भाई आवाज आ रही है अब आवाज आ रही है इमरान भाई। हेलो, माइक टेस्टिंग। अली भैया आवाज आ रही है आप? अभी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है इमरान भाई, आवाज आ रही है। अब ठीक है आवाज? जी जी ठीक है। चलें ठीक है, अब वापिस आ सकते हैं। लेफ्ट कर दे।
Hello, 1, 2, 3. So, Assalamu alaikum. Let us continue to the next session of 7th International Conference on Energy Conservation and Efficiency 2024 with Dr. Muhammad Kamran as our session chair. Dr. Muhammad Kamran currently serving as Vice Chancellor at Muhammad Nawaz Sharif University of Engineering and Technology, Multan since September 2022. Previously, he served as the Dean of UET Lahore Faculty of Electrical Engineering from April 2021 to September 2022. Offered strategic directions and academic oversights. Concurrently, as chairman of the IEEE Journals Board of Publications 2021 to 2023, he ensured publications quality. His tenure in the Pakistan Engineering Council governing body 2021 to 2024 underscores his dedication to engineering education standards. Dr. Kamran's expertise in outcome-based education was pivotal during his leadership as campus coordinator and department chairman at UET Kala Shah Kaku campus. He further contributed significantly to academic management at UET Narowal. His proficiency in procurement and project management facilitated efficient project executions, while his role as an ICECE-approved supervisor reflected his commitment to guiding high-level research. As a PEC accreditation team expert, Dr. Kamran evaluated universities and aided in the preparation of student assessment reports, ensuring academic excellence. Moreover, his consultancy services fostered collaboration between academia and industry. Facilitating innovative research practices in his research pursuits, Dr. Kamran delved into various facets of electrical engineering, including data compression, hardware design, and power quality issues, driving technology advancement. Thank you, sir, for joining us today. Our first invited talk of the fourth session is Energy Conservation and Sustainability Initiative across major industrial sectors in Pakistan by Dr. Syed Shiraz Daud from University of Punjab, Lahore. Dr. Syed Shiraz Daud project leads for the University of the Punjab's 2.5 megawatt solarization plan and the director of the Energy Engineering Research and Development Center will be presented on the topic of conservation initiative across Pakistan's major industrial sectors with potential of regional and international energy sector collaborations. It is important to mention that Dr. Daud has received international recognition award for his research and academic contribution from the University of Leeds and University of Sheffield in UK. He is an advisory board member for an Elsevier publisher high impact factor journal called Fuel and co-inventor of a catalytic additive technology for heat power generation plants. His area of interest are in generation of fundamental and pilot scale research, data in the field of emission mitigation, carbon capture and utilization, waste to heat power generation, catalysis and sustainable renewable energy related challenges. Please welcome Dr. Shiraz with big round of applause. Assalamu alaikum, everyone. Thank you so very much for giving me the opportunity to present on a very interesting topic. I always appreciate the fact that UET brings so much energy and dynamics when it comes to withholding such conferences, workshops, and seminars. And it is always a pleasure
to see the interest from the students as well. I had the privilege of visiting the posters, and it was quite interesting to say, it is quite interesting to say that all the posters, they were done with great degree of effort and hard work. So I extend my congratulations to all the attendees of this conference. Without further delay, let me start with the topic. So when the respected members of this conference approached me in terms of giving a small talk, I had to think that what could be the most important topic when it comes to the energy domain, and especially the areas regards to energy conservation and sustainability. So without further ado, let us start. So the talk outline is being shown in front of your screens. I hope that it is legible. If I can just have a quick show of hands from the last benchers, that क्या आप ये स्लाइड को आसानी से पढ़ सकते हैं? इस पे जो इंफॉर्मेशन है क्या वो आपको नजर आ रही हैं? जी, लास्ट बेंचर्स पढ़ा जा सकता है, नजर आ रहा है? I would request you to please come forward so that you can at least have a read of it. Right. So, energy mix. We will have a little discussion about energy mix. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एनर्जी मिक्स के हवाले से ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मालूम भी है, और मैं पहले से अपोलोजाइज़ करूंगा कि अगर कुछ चीज़ें रेपिटेटिव आपको यहाँ पे दोबारा सुनने को मिलें, वो चीज़ें जो कि शायद आपने पहले पढ़ ली हैं या आपसे पहले स्पीकर्स ने डिस्कस की हुई हैं। तो जो आउटलाइन है उसमें हम एनर्जी मिक्सचर के हवाले से पहले तो पावर ऑर्गेनोग्राम को समझेंगे कि पावर सेक्टर का ऑर्गेनोग्राम क्या है। हम ये देखना चाहेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, और जब हम सेक्टर वाइज पाकिस्तान में एनर्जी फोरकास्ट को डिस्कस करते हैं तो उसमें कौन कौन से एवेन्यूज़ हैं, कौन कौन से ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं कि जो कि फॉर द लास्ट 10 odd years and projected for the next 10 odd years seems to be the main backbone when it comes to the GDP associated with Pakistan's economics. जो सेकंड मेजर चंक होगा उसमें हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। मेरे लिए ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि मैं वो तमाम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को कवर करूं, लेकिन उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे समझ में आए मुझे जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स समझ में आए वो सेक्टर्स को मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। इसमें टेक्सटाइल, सीमेंट, शुगर और फर्टिलाइज़र को हम डिस्कस करेंगे। फिर कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कोलैबोरेशंस। मैं समझता हूँ कि अगर उन पे भी हम एज पॉलिसी मेकर्स और द वंस हु कैन हियर दिस they ponder on that what could be done when it comes to the integration of different energy projects. So let's move on. पावर सेक्टर ऑर्गेनोग्राम में हमें ये अंडरस्टूड है कि पाकिस्तान के हवाले से तकरीबन 3 मेन डिविजन्स हैं जो कि एनर्जी सेक्टर को डील करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, and last but not least is the private sector. But when we delve into the further subcategory division of these 3 sectors, we see that we've got WAPDA, PBIB and AEDB board that basically falls under the Ministry of Water and Power, and then we've got the private sector basically overlooking the IPPs, the SPPs and the K Electric. और इन तमाम सब डिविजन्स को जो बॉडी रेगुलेट कर रही है उसका नाम नेपरा है। आपने ये नाम पहले भी सुना होगा। ये बेसिकली एक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है नेशनल लेवल पे जो कि लुक आफ्टर करती है बहुत सारी चीज़ों को और बहुत सारी स्टडीज़ भी कंडक्ट करते हैं। एनर्जी पॉलिसी के हवाले से थोड़ा सा जानना, थोड़ा सा बैकग्राउंड का होना भी ज़रूरी है।
जब भी हम ख़ास तौर पे एनर्जी पॉलिसी की बात करते हैं तो इसमें 3 एलिमेंट्स जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट तस्वर किए जा सकते हैं। एक, उस एनर्जी पॉलिसी के अंदर कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का सेक्टर होना बहुत ज़रूरी है, वो मुसलसल इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रही हो। अब उसमें कौन से ऐसे एवेन्यूज़ हैं जो मुसलसल इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास एनवायरनमेंट का एक डोमेन है, हमारे पास एनर्जी रिसोर्स का एक डोमेन है, हमारे पास ट्रांसपेरेंसी है, हमारे पास फिजिबिलिटी है। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो कि कॉन्टिन्यूअली इम्प्रूवमेंट के दायरा कार में शामिल होनी चाहिए। फिर हमें ये भी मेक श्योर करना है जब भी कोई एनर्जी पॉलिसी बने या मौजूद हो, उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो रेडली अवेलेबल होनी चाहिए पब्लिक डोमेन में। दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ थिंग विच over the last 5 years I have observed within Pakistan that it has been made possible to be available, readily available. You can access a lot of information through different government-based databases, and you can dig into in terms of numbers if you want to do some form of an analysis. Last but not least, obviously, the energy policy would also comprise of some form of legislation. It has to cover some of the avenues when we talk of the either those regulatory bodies enforce those regulations, or the sectors themselves, they volunteer to take on board those initiatives. एनर्जी कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी की ज़रूरत क्या है, इस हवाले से भी थोड़ा सा हम बैकग्राउंड अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए, ये एक बड़ी फ्लूइड किस्म की मार्केट है जिसमें हम इस वक्त प्रेजेंटली गुजर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि इसमें जो competitiveness है, that is actually the main drive when it comes to energy conservation and sustainability. जब मैं competitiveness की बात करता हूँ तो इससे मुराद ना सिर्फ के रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी, उनकी सोर्सिंग, उनकी प्रोसेसिंग, उनकी कॉस्टिंग, इसमें ये सारे के सारे एवेन्यूज़ आ जाते हैं। और आप लोगों को ये जानकर भी आपकी इंफॉर्मेशन में ये इजाफा होगा कि अब तो कार्बन प्राइस फ्लोर टैक्सेशन के हवाले से बहुत सारी इंटरनेशनल मार्केट की रसाई जो है वो मुंसलिक कर दी गई है कि जब आप अपना किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि बताइए कि इसके पीछे कार्बन फुटप्रिंट की क्या वैल्यूज़ हैं, और वो स्टैटिस्टिकली आपको रिपोर्ट करनी पड़ती हैं और फिर उसको वो वैलिडेट भी करती हैं। अगर आपका प्रोडक्ट जो इंटरनेशनल मार्केट में रसाई हासिल करता है, अगर वो कार्बन प्राइस फुटप्रिंट या कार्बन प्राइस फ्लोर ब्रैकेट्स के डोमेन में नहीं फॉल करता, तो उसके ऊपर फिर सब्सिडीज़ नहीं दी जाती, उसके ऊपर टैक्सेशन इन्वॉल्व कर दी जाती है। तो आपकी वो प्रोडक्ट जो कि पहले मार्केट में शायद कंपेटिटिव हो, अब वो मार्केट में कंपेटिटिव नहीं है। So this is one of the things which you have to bear in mind when we talk of energy conservation and sustainability, कि चीज़ों का competitive होना बहुत ज़रूरी है। जी, if you can please bring the slides back on. Slides लेके आइएगा ज़रा प्लीज स्क्रीन पे। Apologies for that. जी, next slide. जी, और दूसरी सबसे बड़ी वजह एनर्जी कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी के हवाले से वो ये है कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीशन हो रही है, और ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि हम बज़ाहिर पहले समझते थे कि अबंडेंटली अवेलेबल हैं, लेकिन फ्रॉम एंड यूज़र कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू आप देख सकते हैं कि जिस तरह अब कुछ ख़ास पैटर्न्स पे लोड शेडिंग की जाती है सुई गैस को लेके, इलेक्ट्रिसिटी को लेके, तो नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन ड्राइव व्हेन वी टॉक ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। एंड rise in energy prices is obviously attributed with it, and effectively that all is linked in terms of the power crisis. Last but not least is the global climate impact. We all do appreciate
कि पाकिस्तान में जब हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि शुरू में कुछ फोरकास्ट की गई थी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी क्रॉप यील्ड, और विद टाइम फिर हमें पता चलता है कि वो क्रॉप यील्ड के टारगेट्स या हिट नहीं किए जा सके, उसमें बहुत सारे मुहर्रकात शामिल हो सकते हैं. दे कैन बी मैनी रीजंस बिहाइंड इट, एंड वन ऑफ द प्रोन रीजन which is very being established is the climate impact. वेदर फोरकास्ट का पैटर्न चेंज हो जाना, सॉइल की एल्कलिनिटी, सैलिनिटी, एसिडिटी का चेंज हो जाना, इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी क्रॉप, or for that matter the crop which is used for human consumption, or for the matter which is used for production of products, that itself is also important. तो ये एक थोड़ा सा मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ बैकग्राउंड शेयर हो जाए. तो अगर हम इसको जल्दी से समराइज करें तो हमने एनर्जी कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी के हवाले से 3 मेन पॉइंट्स अंडरस्टैंड किए हैं. उसमें एक ये है कि कंपेटिटिवनेस इज़ वन ऑफ द मेन ड्राइवर्स. कोई भी बिजनेस, कोई भी वेन्यू जब तक कि कम्पीट नहीं कर सकता वो आगे की तरफ नहीं चलेगा. डिप्लीशन इन द एनर्जी रिसोर्सेज, शॉर्टफॉल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी प्राइसेस एंड द क्लाइमेट चेंज. नाउ व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी बेसिकली 3 पिलर्स के ऊपर एस्टैब्लिश होती है. जिस तरह कि यहाँ पे आप बॉटम राइट कॉर्नर पे एक डायग्राम देख सकते हैं, इसमें एनवायरनमेंट, सोशल और इकोनॉमिक के 3 पिलर्स हैं. इन 3 पिलर्स में जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग रीजन एग्जिस्ट करेगा उतना आपका मॉडल सस्टेनेबल वे में ऑपरेट कर रहा होगा. अगर मैं इसकी थोड़ी सी मिसाल दूं सोशल एस्पेक्ट से, या जिसको हम इक्विटी स्टेक होल्डर्स भी कहते हैं, तो वो ये समझने के लिए काफ़ी है कि चीज़ों की रसाई आम पब्लिक तक होनी चाहिए, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो एनर्जी है, चाहे वो और किसी भी किस्म की डोमेन है, तो वो अवेलेबल होनी चाहिए. सो दैट मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट व्हेन वी टॉक ऑफ ए सस्टेनेबल सोसाइटी और ए सस्टेनेबल सिस्टम. इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली उसके बगैर तो सारी चीज़ें चलती हैं, चल ही नहीं सकती हैं. इकोनॉमिक्स तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और एनवायरनमेंट. अब ये जानना कि क्या हम सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए सिर्फ एनवायरनमेंट पे फोकस करें, ये गलत सोच होगी. हमें इन तीनों एवेन्यूज को पैरेलल में लेके चलना है, और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा इन टर्म्स ऑफ इनिशिएटिव्स व्हिच हैव बीन टेकन. एनर्जी मिक्स एज ऑफ 2023, ये डेटा जो है वो नेपरा की वेबसाइट से मैंने लिया है. आप देख सकते हैं कि इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. पब्लिक सेक्टर में हमारे पास हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर का एक टोटल चंक जो है वो अबाउट 38% ऑफ ओवरऑल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बनता है. लेकिन उसके मुकाबले में प्राइवेट सेक्टर का तकरीबन 62% फॉल करता है. और मेजर चंक अगर आप देखें स्टैटिस्टिकली तो आपके पास थर्मल IPPs आर द वंस हु आर लीडिंग व्हेन वी टॉक ऑफ प्राइवेट सेक्टर. तो जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है एज ऑफ 2023 फ्रॉम द नेपरा रेगुलेटरी अथॉरिटी रिपोर्ट विच इज पब्लिश इन 2023, उसमें 45,000 मेगावाट, नियरली अबाउट 46,000 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है. लेकिन ये डिपेंडेबल कैपेसिटी जो है इसमें कम है. वो डिपेंडेबल कैपेसिटी इसलिए कम होती है क्योंकि इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी, इक्विपमेंट की वेदरली फोरकास्ट की वेरिएशन, वो ओवरऑल एक इम्पैक्ट करती है. तो आप देख सकते हैं तकरीबन 2,500 से 3,000 मेगावाट का. लेकिन इससे ये हम नहीं गुमान कर सकते कि ये सारी की सारी इंस्टॉल कैपेसिटी हमारे पास रेडिली अवेलेबल है. इस इक्वेशन में जो मिसिंग लिंक है वो है कि डिस्पैच कितनी आसानी से की जा सकती है. डिस्पैच इज एक्चुअली वेयर वी हैव अ बॉटलनेक. यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो कि ख़ास तौर पे रैपिड पावर डिस्पैच के ऊपर इनिशिएटिव्स लेके, उसमें एक सक्सेसफुल एग्जांपल आप मिटियारी की लाइन देख सकते हैं जो कि कमीशन हुई है, और उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं लेकिन एक सब्सटेंशियल एक इम्पैक्ट पड़ा है. मौजूदा सूरत हाल तो अभी हमने पिछली स्लाइड में देख ली. अब आने वाले जो 6-7 साल है उसमें क्या हम पोटेंशियल देख रहे हैं फ्यूचर प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर फोरकास्ट के हवाले से. तो आप देख सकते हैं कि ये डेटा भी मैंने इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाकिस्तान एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट से लिया है, जो कि 2021-2030 के फोरकास्ट को लिंक कर रही है.
इसमें आप देख सकते हैं कि 2030 में अगर मैं टेंटेटिवली इस ग्राफ को एक लाइन में समझाना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका कोल और सोलर वो एट पार आ जाएंगे, यानी कि सोलर विल इफेक्टिवली बी एबल टू रिप्लेस द थर्मल पावर based plants which were effectively running on coal. So that is a major shift. अगर मैं किसी डेवलप्ड कंट्री की मिसाल दूं तो यूके उसकी एक बड़ी जिंदा मिसाल है कि इस साल उन्होंने और पिछले साल उन्होंने 0% अपने पावर जनरेशन जो है वो कोल के ऊपर की है. All of that being based on. There is a very good website. I will request the attendees and the students especially. आप अगर चाहें तो आप नोट कर सकते हैं. इसका नाम है ग्रिड वॉच, GRID वॉच. तो ग्रिड वॉच की अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो आपके पास लाइव डेटा वहां पे जो एनर्जी मिक्स का वो आता है. तो एक तो बात ये तय हो गई कि सोलर इज गोना बी वन ऑफ द मेन पुश व्हेन वी टॉक ऑफ द फ्यूचर फोरकास्ट ऑफ एनर्जी. सेकेंडली आप देख सकते हैं कि हाइडल पे भी बहुत ज्यादा फोकस है. हमारा दासू का प्रोजेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे पहुंचने वाला है. 4,500 मेगावाट आपके पास एक सिस्टम में एनर्जी इनपुट होगी. इसके अलावा दयामीर का प्रोजेक्ट जो है वो अभी ऑब्वियसली फिजिबिलिटी से थोड़ा अभी वो फ्लेजिंग स्टेज पे ही है, अभी वो उस नहज पे नहीं पहुंचा. विंड और LNG जो है ये इनका शेयर 2030 में ऑलमोस्ट एट पार है. और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज ऑब्वियसली बायोमास. सो इस ग्राफ से हमें ये समझ में आ रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो ज्यादा शिफ्ट नजर आ रहा है वो कोल शिफ्ट कर जाएगा, कोल शिफ्ट कर जाएगा रिन्यूएबल में सोलर के ऊपर, विंड के ऊपर कुछ हद तक. लेकिन बजाते खुद कोल की भी एक इंपॉर्टेंस है और वो मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के हवाले से बताऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें रॉ मटेरियल के तौर पर भी आपको फीड चार्ज में इसको इस्तेमाल करना पड़ता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्टर वाइज एनर्जी फोरकास्ट. ये जो स्लाइड है इसमें आपके सामने 6 डिविजन्स हैं. जो सबसे ज्यादा एनर्जी शेयर कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर. आप देख सकते हैं कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये जो ग्राफ आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर का लोड जो है वो रिप्रेजेंट कर, और कोल उसमें जो है वो एक मेजर चंक लेके बैठा हुआ है जिसको यहां पर ब्लैक कलर के शेड से दिखाई दिया जा रहा है. फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, उसके बाद फॉसिल फ्यूल थर्मल पावर जनरेशन है, फिर डोमेस्टिक सेक्टर है, कमर्शियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर है. तो ये 6 मेन डिविजन्स हैं जिनमें आपकी बेसिकली एनर्जी फोरकास्ट देखी जाती है. तो कोयले की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे है. सोलर की आप देख सकते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की डोमेन में एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका एक बड़ा मेजर शिफ्ट आ रहा है. कमर्शियल सेक्टर में भी इसकी एक मेजर इंप्रूवमेंट नजर आ रही है. डोमेस्टिक सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे. इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इसकी सोलर ग्रिड जनरेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, खासतौर पे टेक्सटाइल सेक्टर को लेके, शुगर प्रोसेसिंग सेक्टर्स को लेके, सीमेंट सेक्टर को लेके. ये 3 वो मेजर सेक्टर्स हैं कि जिनमें लिटरली तौर पर ग्रिड इंटीग्रेटेड सोलर को उन्होंने अपने लोड पे शिफ्ट कर दिया है. मेरे पास एज सच डेटा ये अवेलेबल नहीं है कि जिसमें मैं ये बता सकूं कि पाकिस्तान में नंबर 1 पे इंडस्ट्री कौन सी है, ऑथेंटिक डेटा जिसको आप सब्सटेंशिएट कर सकें. लेकिन अवेलेबल इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट्स और जहां तक मैं मुख्तलिफ साइट को विजिट्स करके अंडरस्टैंड कर सका हूं, मैं ये समझता हूं कि टेक्सटाइल सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिलेटेड सेक्टर्स, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि हैवीली एनर्जी डिपेंडेंट हैं. और मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो 50 से 60% इंडस्ट्रियल सेक्टर का हिस्सा बनता है. तो लेट्स नाउ मूव ऑन टू टेक्सटाइल सेक्टर इनिशिएटिव्स. टेक्सटाइल सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल, आप चाहे तो आप उसको देख सकते हैं. यहां पर मैंने स्टेप 1 से 5 के दरमियान एक मुझे अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिली पंजाब टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से, तो मैंने यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर दी. आप देख सकते हैं कि ये स्टार्टिंग प्रोसेस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड की तरफ जाता है. लेकिन यहाँ जो मैं एक इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट करना चाहूँगा वो बॉटम ऑफ द स्लाइड पे है
कि एनर्जी कंजम्पशन में तकरीबन 34% जो है वो स्पिनिंग में इस्तेमाल हो रही है, 23% वीविंग में इस्तेमाल हो रही है, 38% केमिकल प्रोसेसिंग में इस्तेमाल हो रही है। और चूंकि मोस्टली पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर वेट बेस्ड प्रोसेस के ऊपर बेस करता है, तो जितना भी फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, फ्यूल की जो कंजम्पशन इस्तेमाल हो रही है, वो इफेक्टिवली उस ही पानी को एवेपोरेट करने में या उसको ट्रीट करने में इस्तेमाल हो रही है। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स टू बेयर इन माइंड व्हेन इट कम्स टू द फ्यूल कंजम्पशन फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। Almost more than 60% of the overall energy is affixed to that section. Now next slide has got a sort of a material plus energy split balance. इस स्लाइड को समझने के लिए थोड़ा सा इसको मैं आसान अगर करूं तो मैं ये कहूं कि आपके लेफ्ट साइड पे इनपुट्स हैं और राइट साइड पे आपकी आउटपुट्स हैं। इनपुट्स में आपके पास, चूंकि मैंने जिस तरह अर्ज किया कि वाटर ज्यादा इसमें इस्तेमाल होता है इस सेक्टर में, तो वाटर की अगर कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो 3361 क्यूबिक मीटर रोजाना की बुनियाद पर टेक्सटाइल सेक्टर वाटर की खपत लेता है। सो दैट्स अ ह्यूज नंबर एंड दिस इज ए टिपिकल प्लांट which is processing about 100,000 meter of finished product on daily basis. देखिए 1000 मीटर अगर कपड़ा जो है वो रोजाना की बेस पे कोई प्लांट ट्रीट कर रहा है तो उसको तकरीबन 3360 के करीब क्यूबिक मीटर जो है वो रोजाना पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सस्टेनेबिलिटी में वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट is indeed a very important point and it has become a challenge for us as Pakistanis as well. इसके अलावा अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो आपके पास 3 मेजर स्प्लिट्स हैं। आपके पास एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ग्रिड से, आप फ्यूल यूज कर रहे हैं, चाहे वो नेचुरल गैस है चाहे वो कोयला है, और आप केमिकल्स यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बॉटम में आपके पास केमिकल्स हैं, ये नेचुरल गैस का स्प्लिट है, फिर यहां पर आप कोल इस्तेमाल कर रहे हैं और ये ग्रिड से ले रहे हैं। ये डेटा जो है वो WWF के कुछ लोगों से कम्युनिकेशन के बाद और कुछ प्लांट के विजिट्स के बाद मैंने एक्यूमुलेट किया है। इसमें मैं एग्जैक्ट नंबर्स आपके सामने नहीं रख सकता बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने रख सकता हूं वो स्प्लिट रेशियोज हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुल नेचुरल गैस जो यहां पर प्लांट में इस्तेमाल की जा रही है उसका तकरीबन 67% रोजाना वो इस्तेमाल हो रहा है स्टीम जनरेशन में, और जो 33% है वो डाइंग और हीट सेटिंग में इस्तेमाल हो रहा है। और अगर उस स्टीम का फर्दर स्प्लिट देखें तो वो 70 और 30 की रेशो बनती है व्हेन इट कम्स टू वाटर हीटिंग एंड इट कम्स टू डाइंग एंड हीट सेटिंग। और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का भी अगर आप स्प्लिट देखें तो 90-10% रेशो है, जिसमें से 90% एनर्जी मोटर ड्राइव्स या मैकेनिकल ड्राइव्स को इस्तेमाल करने में इस्तेमाल हो रही है, और 10% जो है वो अपनी लाइटिंग या रोसेस या इल्यूमिनेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये जहां जहां पर मेजर स्प्लिट होते हैं वही आपके लिए अट्रैक्टिव एवेन्यूज होते हैं फ्रॉम सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम एनर्जी कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें एक रूल ऑफ थंब है। रूल ऑफ थंब ये है कि कहां से आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इंटरवेंशन की मदद से सेविंग कर सकते हैं फ्रॉम सस्टेनेबिलिटी एंड कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और उमूमी तौर पर देखा गया कि 15% तक की ब्रैकेट तक आप जा सकते हैं, जिसमें आप एक नॉमिनल सा एक्सपेंस कर देंगे, नॉमिनल सी प्लांट में मॉडिफिकेशन कर देंगे, मेजर रीवैम्पिंग नहीं करेंगे, मेजर प्लांट की जो है वो चेंजेस नहीं लेके आएंगे। अगर मेजर चेंजेस लेके आना चाहते हैं तो फिर आपको 70% तक जो है वो रिवॉर्ड मिल सकता है फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू। राइट हैंड साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर वेट प्रोसेसिंग यूनिट में आप देख सकते हैं कि आपके पास वेस्ट हीट रिकवरी, हॉट फ्लू गैसेस हैं, और वो वेस्ट वाटर जो कि बेसिकली डिसॉल्व्ड केमिकल्स अपने अंदर लेके जा रहा है। तो ये 3 वो एवेन्यूज हैं जिन पे एक्टिवली पाकिस्तान में मौजूद टेक्सटाइल सेक्टर काम कर रहा है, और एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से इनमें मैसिव पोटेंशियल है। तो जब हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे, हमने एनवायरनमेंट का समझ लिया, हमने इकोनॉमिक्स की बात की, हमने पब्लिक इक्विटी की बात की। So all 3 avenues are now basically being discussed in terms of quantified number in the next slide. इस स्लाइड को मैं जल्दी से स्किप करूंगा because I have to keep an eye on the time as well.
तो ये कुछ स्टैंडर्ड किस्म के प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि आप एडॉप्ट करते हैं एज एनर्जी इंजीनियर, एज एनर्जी ऑडिटर, that which are the avenues, what sectors you have to keep in mind in terms of energy conservation. तो हीट रिकवरी बॉयलर से आप कर लें, इकोनोमाइजर लगा लें, प्री हीटर लगा लें, आपके कंडेंसर्स जो हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, चिलर्स आपके एब्जॉर्प्शन टाइप हो जाएं, तो ये एक बड़ी ह्यूज लिस्ट है जो कि इस्तेमाल की जा सकती है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे से। हमारे पाकिस्तान में ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स इंडस्ट्री अडॉप्ट कर रही है, बसा औकात मजबूरी के तहत, बसा औकात एनफोर्स, बसा औकात खुद इनिशिएटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जिस तरह आपसे पहले अर्ज किया कि कंपेटिटिवनेस में जो फ्यूल सेविंग्स हैं, जो प्रोडक्ट की प्राइस है, वो एक मेन ड्राइवर है। तो ये 3 स्कीमेटिक्स हैं। इसमें अगर मिड वाली स्कीमेटिक को देखें, ये एक बड़ा टिपिकल सा सेटअप होता है बॉयलर का। आप में से वो लोग जो बॉयलर या थर्मल पावर प्लांट्स या थर्मल जनरेशन के साथ फेमिलराइज हैं, तो बॉयलर के एंड प्रोडक्ट में बेसिकली आपके पास सुपर हीटर से एक स्टीम निकलती है जो कि आप टरबाइन बे में ले जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, मुख्तलिफ मैकेनिकल ड्राइव्स को चलाने के लिए। इकोनोमाइजर से आप बेसिकली रिकुपरेट कर रहे होते हैं, रिकुपरेशन करते हैं अपनी हीट का, और एयर प्री हीटर्स। मोस्टली इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पाकिस्तान में जो एग्जिस्ट करते हैं उसमें इकोनोमाइजर्स नहीं है टेक्सटाइल यूनिट्स के अंदर, लेकिन अब लगा रहे हैं, वो धड़ाधड़ लगा रही है। इकोनोमाइजर वाला खर्चा ज्यादा है, प्री हीटर्स का खर्चा थोड़ा सा कम है, लेकिन प्री हीटर्स की एफिशिएंसी गेन कम है, इकोनोमाइजर्स में एफिशिएंसी गेन ज्यादा है। बॉटम राइट कॉर्नर में एक ब्लो डाउन, हम बेसिकली एक सिस्टम है हमारे बॉयलर्स के अंदर ही, एक ब्लो डाउन हम सेट करते हैं कि कितना हमने उसको सेट करना है। अमूमी तौर पर ये 4 से 5%, 6% पे सेट करके ऑपरेटर्स को वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई, या वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फुकदान रहा कि एक नॉर्मल सॉर्ट ऑफ बहुत ही मीडियोकर लेवल से होते लोग प्रमोट होते हुए ऊपर की तरफ गए, तो वो वही कर रहे हैं जो उन्होंने अपने बड़ों को करते हुए देखा। तो जब इंडस्ट्री के विजिट करके हम उन्हें कहते हैं कि जी आप अपने सूट ब्लोअर्स को जो है वो 4 घंटे की बजाय 8 घंटे पे ले जाएं, आप ब्लो डाउन की परसेंट जो है वो 5% से कम करके 2% पे ले जाएं, वाटर की एलिक्लिनिटी और उसकी कंडक्टिविटी भी मैनेज की जा सकती है। तो उनके लिए थोड़ा सा सरप्राइज होता है, बट दे आर टेकिंग दीज थिंग्स ऑन बोर्ड एंड दीज इनिशिएटिव्स आर कमिंग ऑन। सिमिलरली द डाई रीसाइक्लिंग एंड द वाटर हीट लूप, ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्सटाइल यूनिट्स में ही कुछ ऐसे पोटेंशियल एवेन्यूज हैं जहां पर आप छोटे छोटे लूप साइकिल्स लगाकर भी 1-2% की एफिशिएंसी गेन्स ले सकते हैं। एनर्जी रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलेटेड इनिशिएटिव्स मैं जिस तरह पहले जिक्र कर चुका हुआ हूँ कि सोलर के ऊपर भी शिफ्ट कर रही हैं, लोड जो है को जनरेशन की तरफ भी जा रहा है, अल्टरनेटिव फ्यूल्स में जो चीप फ्यूल मिलता है उसकी तरफ भी शिफ्ट कर जाते हैं। इसके अलावा बॉयलर्स के ऊपर ऑटोमेशन के हवाले से ऑक्सीजन ट्रिम कंट्रोल सिस्टम जो है वो एक इनिशिएटिव है जो कि लिया जा रहा है, क्योंकि ये एक बेटर कंट्रोल देता है आपको एग्जॉस्ट गैसेस के जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैंस की रेटिंग, और कितना उसने अपटेक में ऑक्सीजन लेनी है और कितना ड्रम का लेवल मेंटेन होना चाहिए। इन तीनों, ये आपके वो 3 मेन पिलर्स हैं बॉयलर की ऑटोमेशन के हवाले से। तो ऑक्सीजन ट्रिम कंट्रोल बेसिकली अलाउज यू टू have minimum amount of oxygen going into the system rather than having a lot of oxygen going into the system. You can control it, meaning to say you can then control the overall volume of expanded gases, and that itself is a plus point at the same time. इस स्लाइड पे कुछ numbers हैं in terms of the economics and the overall potential of CO2 savings. तो एक टिपिकल 10 टन्स पर आवर की कैपेसिटी का अगर बॉयलर इकोनोमाइजर उस पर लगा दें तो आपकी कॉस्ट तकरीबन 3 मिलियन रुपीस तक आती है, और उसमें फाइनेंशियल सेविंग्स आपको सालाना की बुनियाद पर 6 मिलियन मिलती है। ये फाइनेंशियल सेविंग किस ज़िमन में मिलेगी? आपका फ्यूल जो पहले ज़्यादा इस्तेमाल करके आप स्टीम बना रहे थे वो अब आपका कम लगेगा,
और वो हीट जो कि सरप्लस आपके सिस्टम में मौजूद थी, आप उसको रिकूपरेट कर रहे हैं इकोनोमाइजर के थ्रू। तो नेचुरली जब आपकी फ्यूल की सेविंग हो रही है तो CO2 मिटिगेशन में भी आपका एक पोटेंशियल आ जाएगा, और वो तकरीबन 350 टन का बनता है सालाना। इसी तरह एयर प्री हीटर की कॉस्ट है। तो ये केस स्टडी है इंडस्ट्री के इनिशिएटिव में। ओनर्स एंड द स्टेक होल्डर्स, they do not necessarily want to take an action on the basis of that it is good for the environment. They will only take an action if it is financially making some sense. And they want to see the precedents at the same time. They want to see where is it being done. पहले आपने कहीं किया है जी, बताइए कहाँ पे हो रहा है, अच्छा बताएं फ़ायदा कहाँ पे है, अच्छा जी मुझे ये इन्वेस्टमेंट कितने अरसे में रिकवर हो जाएगी। तो इस हवाले से भी आप स्टूडेंट हजरात भी और मेरे जो रिस्पेक्टेड कॉलीग्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट्स के अंदर हम एक चीज़ जो इनकलकेट आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं वो ये है कि आप इकोनॉमिक मॉडल जो है उसकी भी टेक्नो इकोनॉमिक्स के एवेन्यूज़ को भी बिल्ट इन करें अपनी स्टडीज़ के अंदर, रिसर्च के एवेन्यूज़ के अंदर, क्योंकि उसके अलावा आगे मामलात नहीं चलते हैं। एक चीज़ देखने में बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन कमर्शियल वायबल ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। कॉस्टिक सोडा की जो रिकवरी है वो बजाते खुद एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसके बहुत ढेर सारे फायदे हैं। एक तो आपका केमिकल बचेगा, आप उसी केमिकल को रिकवर कर रहे हैं। दूसरा, आपका एनवायरनमेंट भी पोल्यूट नहीं होगा। तो इस तरह ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स, एंड दीज आर द इनिशिएटिव्स व्हिच हैव बीन डन in the textile sector of Pakistan, though not at the large level, but industries are taken gradual steps towards it. अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं इसी सेक्टर के अंदर रहते हुए, लेकिन जहां चैलेंजेस होते हैं वहां पर ही अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है रॉ मटेरियल का। आपका एक सेक्टर है, हम कहते हैं सुनते हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री ख़ास तौर पर कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो बड़ी हेविली रिलाई करती थी। वन ऑफ द डेज वेयर द GDP यूज्ड टू हैव अ मेजर चंक बेस्ड ऑन दैट इंडस्ट्री। तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी एक इशू बनता जा रहा है, इसलिए बहुत ढेर सारी रिसर्च एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रही है और नए नए सीड्स जो हैं बन रहे हैं। प्राइसिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इश्यूज। तो ये जो दूसरा बुलेट पॉइंट है, ये अक्रॉस एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स आपको देखने में मिलेगा। मशीनरी ओल्ड मिलेगी आपको, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और रेगुलर उसकी मेंटेनेंस करनी ज़रूरत भी होती है, बिकॉज सम ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैव ए कॉन्टिन्यूस स्पेल वेयर दे हैव टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। मिसाल ले लेते हैं शुगर इंडस्ट्री की, 100 दिन का साइकिल है, उन्होंने चलना ही चलना है, 24/7 चलेंगे वो। 6 महीने जो उनका शटडाउन आएगा या 7 महीने का जो शटडाउन है, उसमें उन्होंने एक एक नट, एक एक बोल्ट की उन्होंने मेंटेनेंस करनी है, क्योंकि इक्विपमेंट पुराना है और फिर उसका एक चंक है फाइनेंशियली विच दे हैव टू बेयर। टैरिफ की रैशनलाइजेशन का एक बहुत बड़ा इशू है, जिसको देखते हुए इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल सेक्टर ने खुद अपने ओन पे 2 से लेके 6, 7, 8 मेगावाट के सोलर प्लांट्स लगाना शुरू कर दी, लग चुके हुए हैं, चल रहे हैं, because they wanted to offset the tariff rationalization, and the way going forward was to have a bit of an interdependence. So these were the few of the initiatives taken when we talk of textile sector. सीमेंट सेक्टर, ये एक लेआउट है जो मैंने आपके सामने रखा है। ये उन लोगों के लिए जो कि प्रोसेस इंडस्ट्री के हवाले से सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस को शायद फेमिलियर ना हो उनसे पहले, तो इसको मैं ब्रीफली जिक्र कर देता हूं कि क्वारीज से आप लाइम या सिल्ट्स बेस्ड जो हार्ड रॉक है उसको आप एक्वायर करते हैं, उसको आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको क्रश करते हैं, फिर उसको ग्राइंड करते हैं, फिर ब्लेंड करते हैं, फिर उसकी प्री कैल्सिनेशन करते हैं, फिर आप उसको पायरो रोटरी किलिन्स में ले जाते हैं, उसके बाद फिर आप उसकी क्लिंकराइजेशन करते हैं और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका सीमेंट का प्रोडक्ट जो है वो बनता है। तो ये इसके मोटे मोटे स्टेप्स हैं। इस सारे स्टेप में 95% जो थर्मल एनर्जी का एट्रीब्यूट है वो टुवर्ड्स प्री कैल्साइनर्स एंड किलिन्स है, 95%. So obviously, wherever that major chunk is going to be, the room for improvement and growth is going to be in that as well. इसलिए बहुत ढेर सारी रिसर्च हो रही है किलिन्स के हवाले से। पाकिस्तान के सेक्टर में बहुत मेजर यूनिट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स ले लिए और काफ़ी हद तक अब वो सेफ मोड में चले गए हुए हैं।
सीमेंट की प्रोडक्शन के हवाले से कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं। पाकिस्तान में जब सीमेंट बनता है तो उसकी स्पेसिफिक थर्मल एनर्जी यूटिलाइजेशन तकरीबन 0.5 टू 0.8 गीगा जूल्स पर टन क्लिंकर निकलती है। इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से ये ज़्यादा है। स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक एनर्जी यूटिलाइजेशन भी तकरीबन 12 से 15 किलोवाट आवर पर टन क्लिंकर की बेस पे बनती है, ये भी ज़्यादा है। इसका मतलब है इसमें रूम फॉर इम्प्रूवमेंट भी है। वो किस तरह इंप्रूवमेंट आ सकती है? एमिशन के हवाले से पहले हम जिक्र कर लेते हैं। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्लाइड है लेकिन मैं इसको आसानी के लिए ये बताऊंगा। आपका रॉ मिल से मटेरियल आया, प्री हीट हुआ, प्री कैल्साइन हुआ, रोटरी किलन में गया, क्लिंकर बना, प्रोडक्ट बन के बाहर आ गया। क्लिंकर जब निकलता है तो तकरीबन 1400 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे निकल रहा है। नेचुरली यहां पर आप कूलिंग एयर इंजेक्ट करेंगे ताकि आप उस हीट को रिकूपरेट करें और फिर उसको इस्तेमाल करते हुए सेकेंडरी और टर्शरी एयर्स में आप स्प्लिट कर देंगे। वही एयर जो कि कंबस्टन में इस्तेमाल होनी थी। कंबस्टन कहां हो रही है? आपकी यहां पे कंबस्टन रोटी किलन में हो रही है और प्री कैल्साइनर के अंदर भी समटाइम्स करती है। तो वो एनर्जी जो कि क्लिंकर लेके जा रहा था, इंडस्ट्री ऑलरेडी इस वक्त हाजिर दौर में उसको रिकूपरेट कर रही है। लेकिन जो इशू और जो मार्जिन इंप्रूवमेंट है वो है एमिशंस की साइड पे। एमिशंस को ऐसा ट्रीट करके एग्जॉस्ट नहीं किया जा रहा। तो ये एक बड़ा यूनिक किस्म का एक साइकिल है जो मैं यहां आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ये रेड में कुछ सेक्शन को हाईलाइट किया है जो कि प्री हीटर के आउटलेट पे सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन का एक साइकिल है। ये सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां से हमने एक लूप बनाया है जो कि प्री कैल्साइनर और रॉ मिल के दरमियान चलेगा। सिर्फ इस लूप की वजह से ही आपकी नेट एफिशिएंसी गेन फ्रॉम एनर्जी एंड एज वेल एज फ्रॉम एमिशन सब्सटेंशियल है। फिर यही एग्जॉस्ट जो है वो फ्यूल ड्राइंग में भी इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट साइकिल आगे भी जरा प्लीज क्लिक कर दीजिए। जी जी। तो कंबाइंड हीट एंड पावर साइकिल के अंदर भी मुझे कहा गया कि मेरे पास टाइम लिमिटेड, सो आई विल ट्राई टू रश थ्रू थिंग्स। आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट दिस मटेरियल कैन बी मेड अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स एज वेल। कंबाइंड हीट एंड पावर साइकिल पे भी एससीआर की रिडक्शन करके आप फ्लू गैस को कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें CO2 की एमिशन को आप रेगुलेट कर सकते हैं। क्यों सीमेंट सेक्टर ये करे? उसको क्या फायदा है? ये तो कॉस्ट है ना, एनर्जी सेविंग में तो कुछ शायद बेनिफिट हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि तकरीबन 13% की पाकिस्तान में बॉटलिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ की प्रोजेक्शन है। ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं हम लोग पीते, तो वो CO2 जो कि आपने इस प्रोसेस के दरमियान कैप्चर की, वो आपका एक वायबल प्रोडक्ट है जो कि आप बजाते खुद बॉटलिंग इंडस्ट्री या कार्बोनेशन बिजनेसेस से मुतल्लिक जो इंडस्ट्रीज हैं उनको आप एज ए कमोडिटी सेल कर सकती हैं। सो द बिजनेस डायनामिक्स एंड द मॉडल हैज टू मेक सेंस, अदरवाइज दे वोंट इन्वेस्ट इनटू इट। जी आगे क्लिक कीजिएगा। तो 45% तकरीबन इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अब सोलर पे शिफ्ट कर दी हैं सीमेंट के कुछ मेजर ग्रुप्स ने, मैं नाम नहीं लूंगा, और तकरीबन 5 से 30% जो है ना वो अल्टरनेटिव फ्यूल की मद में जा रही हैं। उसमें मुख्तलिफ किस्म के फ्यूल्स के ऊपर काम हो रहा है। रॉ चार्ज के ऊपर बड़ी एक यूनिक, क्योंकि ये सीमेंट सेक्टर ऐसा है कि जिसमें रॉ मटेरियल घर के अंदर मौजूद है और बेइंतहा मिकदार में मौजूद है, और उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए इंप्रूवमेंट जो है वो इसमें काफी ज्यादा है। तो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज भी ऑब्वियसली इसमें एग्जिस्ट करती हैं। जी आगे प्लीज चलिएगा। जी आगे चलिए। जी आगे चलिए। नेक्स्ट। तो
शुगर मैन्युफैक्चरिंग में ये दो एरियाज हैं जिन पे बहुत ढेर सारी रिसर्च है। बजाते खुद हमने कुछ प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एनर्जी इंजीनियरिंग रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर ने विन किए हैं और हम के अभी कमर्शियल ट्रायल्स करवा रही हैं। उसमें प्रिलिमिनरी हमारे पास कुछ रिजल्ट्स भी हैं, मैं यहाँ आपके साथ शेयर भी करूँगा। बॉयलर सेक्शन में आप बहुत ढेर सारी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और एवेपोरेटर्स की साइड पे कर सकते हैं। एवेपोरेटर्स में ऑलरेडी कमर्शियली फॉलिंग फिल्म एवेपोरेटर्स मार्केट में रिप्लेस करते जा रहे हैं मल्टीपल इफेक्ट एवेपोरेटर्स को, लेकिन एक्सपेंसिव कैपिटल इसमें इन्वॉल्व है। तो जो काम अभी फिल वक्त हमने किया है वो ये है कि हमने रिसाइकल, जो बॉयलर्स के बैकएंड पे आपकी रिसाइकल गैस आ रही थी, जो फ्लू गैस आ रही थी, उसको हमने रिसाइकल किया, लेकिन रिसाइकल करने के साथ साथ हमने उसमें कुछ ऐसा मटेरियल जो कि बॉयलर की फंक्शनैलिटी को इंप्रूव भी कर सकता है इन टर्म्स ऑफ एडिटिव, वो भी डोप कर दिया। तो रिजल्ट्स यहाँ पे एमिशंस के हवाले से कि तकरीबन 90% हमें इंप्रूवमेंट मिली है। ये बॉयलर जो है ये 25 टन की कैपेसिटी का बॉयलर है जो कि मीडियम लो प्रेशर बॉयलर था। तो इस पे कुछ रिजल्ट्स हैं जो यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। एमिशंस के हवाले से आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ टेस्ट की कंडीशंस के ऊपर हमें मोर देन 90% रिडक्शन एमिशंस में मिल रही है और फ्यूल की भी सेविंग्स हमारी तकरीबन 1 to 1.5% हो रही है विद बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? एक आपने बड़ा सा ब्लोअर लगा देना है और उस पर एक फीडिंग मैकेनिज्म इंस्टॉल करना है। वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है फॉर ए टिपिकल साइज ऑफ दैट प्लांट। फर्टिलाइजर, स्मेल्टर, फूड इंडस्ट्रीज में भी बहुत ढेर सारे इनिशिएटिव्स इन्हीं बुनियादों पे लिए गए हैं जो प्रोटोकॉल मैंने आपके सामने पहले डिस्कस किए। वक्त की कमी की वजह से मैं थोड़ा सा इसको स्किप करूंगा, बट दीज आर प्रिटी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे मैं बेसिकली जाना चाहूंगा वो है स्ट्रेटेजिक एनर्जी कोलैबोरेशन। इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको बहुत कम इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस होती हुई दिखाई देगी। इंटरनेशनली पाकिस्तान के मुख्तलिफ एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, हम सुनते आ रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ रुके हुए हैं, कुछ को दोबारा मोमेंटम की ज़रूरत है। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स में हमारी अपनी नीड है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने अर्ज किया कि हमारी ग्रोथ्स हैं 12% के करीब। मैंने आपके सामने रखा कि कार्बोनेटेड फिजी ड्रिंक्स रिलेटेड इंडस्ट्री में है, 25% सोलर के अंदर है, 35% के अंदर आप ओवरऑल एक एग्रीकल्चर सेक्टर में प्लस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से उसमें आपके पास पोटेंशियल है। तो क्या इस सारी डिस्कशन में हम इस चीज़ को नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकते कि हम अपने नेबर्स के साथ भी इंटरकनेक्टेड एनर्जी कोलैबोरेटर्स प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें? ऑलरेडी मौजूद भी हैं। ईरान से हम तकरीबन कोई 250 मेगावाट का इंटरकनेक्टर पे इनपुट लेते हैं। 5000 मेगावाट की कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है। इन्वेस्टमेंट करके उसको बनाया जा सकता है, एग्जिस्ट नहीं करती सॉरी, लेकिन उसको बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह अफगानिस्तान जो है वो एक बड़ा पोटेंशियल आपका इंटरकनेक्टर पॉइंट बन सकता है। तो जितनी भी एनर्जी कंजर्वेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट फ्रॉम पावर पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बातें करें तो उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो डिस्कशन में अक्सर व बेशतर मिस किया जाता है। वो ये है कि क्यों हम एक नेट एनर्जी एक्सपोर्ट कंट्री नहीं बन सकते हैं। सिर्फ उन एवेन्यूज के ऊपर थोड़ा सा बैठ के तवज्जो के साथ डिस्कशन करने की जरूरत है और उनको अडॉप्ट करने की जरूरत है। इंडिया हमारा नेबर, फॉर ऑल द रीजंस ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन इश्यूज, बट दे आर डूइंग इट, दे हैव डन इट। we Pakistanis are already doing it with Iran. Why can't we do it with Afghanistan? Why can't we explore the avenues on that front? And there are some studies which worked on कि सीजनल वेरिएशन में कुछ ऐसी टाइड्स आती हैं, कुछ ऐसे स्पेल्स आते हैं कि जिसमें हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, वो हम इन्हीं इंटरकनेक्टर से इनपुट के तौर पर ले सकते हैं। और रेट्रोस्पेक्टिवली उनकी सीजनल वेरिएशन में कुछ ऐसी डिमांड्स होती हैं कि जिनमें उनकी एनर्जी नीड ज़्यादा होती है और हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस एवेन्यू के ऊपर भी डिस्कशन और एक ओपन डिबेट की ज़रूरत है।
इस हवाले से ये कुछ स्लाइड्स थी जो मैंने फॉर्मुलेट की हैं, और ये भी एक अच्छी स्टडी मेरी आंखों से गुजरी जिसमें उन्होंने डिटेल में सीजनल वेरिएशंस को भी इनकॉर्पोरेट किया और इकोनॉमिक वायबिलिटी भी प्रोजेक्ट की डिस्कस की है. Now I'll swiftly move to the end of the slides. Again, I do apologize. There was a little more material which was being kind of plugged in. What are the summary key points? Summary key points are that industrial sectors across Pakistan, they are already taken the initiatives. मैंने जिस तरह अभी आपके सामने मिसालें दी, मैं बज़ाहिर डायरेक्टली भी जानता हूं और कुछ इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है. सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, शुगर सेक्टर, ये चार वो सेक्टर्स हैं कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव्स करके इन्वेस्टमेंट्स लगाकर उससे सेविंग्स लेना शुरू कर दी हुई हैं. चाहे वो हीट रिकवरी हो, चाहे वो फ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ चले जाएं, चाहे वो ऑपरेशंस के अंदर ऑटोमेशन इन्वॉल्व कर दें. So there are potential benefits. The other initiative which we have to take into account is the diversification of the resources. Solar is a very good way forward, but it's not the only way forward. मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, जर्मनी में एक बड़ी अच्छी रिसर्च की गई और उस रिसर्च की बेस पे उन्होंने जितने भी 1 से 2 मेगावाट की कैपेसिटी के छोटे डीजल फायर्ड बैकअप पावर जनरेटर्स थे, उनको उन्होंने इक्वेशन में से निकाल दिया. और उनका ये कहना था, sorry, I beg your pardon, it's the other way around. They plugged those smaller generators into the system and they took out the coal generation from the system. और उनका ये कहना था कि जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं वो एमिशंस ज्यादा एमिट करती हैं, जबकि डीजल या ऑल्टरनेटिव फ्यूल बेस्ड स्मॉल geospatially located plants they could emit lesser of pollutants. But they missed out something very important from all of that study, and the thing which they missed was the initial ramp up and the steady load time. And when they did that project, it was a feasibility and then a project kicked on, and then initially उन्होंने उसका 2 साल का साइकिल चलाया, तो उसमें उनको पता चला कि एक्चुअली जब हम डीजल फायर्ड बैकअप प्लांट्स को चलाते हैं और जब तक वो पूरे लोड पे जाते हैं, वो ज्यादा CO2 एमिट कर रहे हैं कंपेयर टू कोल पावर स्टेशन व्हेन बीइंग ऑपरेटेड अंडर स्टेडी लोड. सो सिमिलरली जो अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज या जो हमारी एनर्जी पॉलिसी की स्ट्रेटजीज हैं, उसमें हमें डाइवर्सिफिकेशन को ज़हन में रखना है, लेकिन किसी एक तरफ टू मच टिल्ट नहीं कर जाना, बिकॉज दैट विल इफेक्टिवली नॉट बी अ वाइज अप्रोच. इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इशू अक्सर वो बेशतर सुनने में मिलता है कि जी बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है. पहले प्रोविंशनल लेवल पे, पहले फेडरल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन चलती थी, अब वो स्प्लिट करके 2-2, 4-4 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में ब्रेक डाउन कर दी गई हैं, तो हमें बड़ा इशू है इसमें. तो वन विंडो फैसिलिटेशन ऑलरेडी द प्रोविंस ऑफ सिंध हैज डेमोन्स्ट्रेटेड एंड देव एग्जीक्यूटेड इट, and there seems to be going well on that front. So why the rest of the provinces can follow that suit, and I see a very great degree of hope that being going forward. Last but not least, industry and academia nexus is important. Believe you me, industry और आपकी यूनिवर्सिटीज, इनके दरमियान जितना क्लोज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, उतना ही आप आगे की तरफ बढ़ सकेंगे. और इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडस्ट्री के लोग वो पूछते, उनके प्रॉब्लम्स हैं, वो ट्रबल शूट करना चाहते हैं, वो कहते हैं हमें सॉल्यूशंस मुहैया करें, और हमारे पास ये नॉलेज भी है, हमारे मेंबर्स के पास ये नॉलेज भी है और रिसोर्सेज भी हैं. जो इशू आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. बट लेट्स नॉट टेक अ बिग लीप, टेक स्मॉल स्टेप्स. कोई छोटा प्रॉब्लम उनका आप लेके आए, उसको हल कर दें, फिर उससे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं, उसको हल कर दें. So this is where I would conclude. Again, I apologize for being taken too much time. Thank you so very much. Any questions, please? Thank you very much, Dr. Saab. This is very informative, and we need to sit together to actually enhance all these things and to put in Pakistan, of course, for the progress of this country. If you have any question, you may ask. Otherwise, we will finish this talk. Thank you very much, sir.
Thank you, sir, for your informative talk. We would like to invite Dr. Muhammad Kamran to present this veneer to Dr. Syed Shiraz Daud. Our second invited talk is development of protective solutions to prevent high voltage insulator damage in polluted and contaminated industrial zone by Dr. Muhammad Kamran from UET Multan. Please welcome Dr. Muhammad Kamran with big round of applause. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This talk is actually directly related to the PhD work of my student, which is underway right now. So I'll be moving fast in order to finish the things as soon as possible. I am actually Vice Chancellor, MNS, University of Engineering and Technology, Multan. And this PhD research is actually underway under my supervision by Engineer Taqir Raza. Actually, what I'm going to suggest, modern era is totally dependent on the electric power and demand is increasing at tremendous rate due to urbanization. And of course, industrial growth. Electrical power system needs to be reliable for uninterrupted supply, which means to enhance the power quality. Quality is a very important issue. The most important thing which is under discussion is the failure of the insulator. This is one of the key reasons for the power quality depreciation. Sometimes substations or the transmission lines are located in vicinity of industry region where harmful pollutants exist. जैसे वाबड़ा टाउन ग्रिड स्टेशन है, ऐसे बहुत सारे स्टेशन हैं जहाँ पे आपके पास ड्रेन है इंडस्ट्रियल, वहाँ पे वेस्ट जोन सी है that is evaporated and causing the unwanted failure or premature failure of the insulators which cause complete damage of the system. So this was the idea which were perceived by us and doing research on it, that what we need to do in order to increase the life of the insulator. So depending upon the geographical location and the areas, variety of the pollutants differ, just like chloride salts in coastal areas where the vicinity of the cement industry or the coal plant, CO are more dominant in these industries. Hydrogen sulfide and sulfuric acid is developed with the drain containing sewerage water. And this happened actually in Wabda Town Grid Station, from where we picked the idea that what we need to do. The deposition of the pollutants cover the surface outdoor insulators and creates hydrophilic path. एक पानी का जो रास्ता है वो जो उसको अट्रैक्ट करता है वो बन जाता है, जिससे आपका कंप्लीट फेलियर होता है, उस इंसुलेटर का फ्लैश ओवर हो जाता है, which causes the flash over. It also increases the risk of rusting, corrosion and the deterioration of the materials. Accelerating factors include temperature and synergistic effect of the chemical combinations. Some of the anti-DC substations have been reported to be located in industrial zone and facing problems of the polluted contaminants. Wabda Town, Lahore, Ravi Grid Station are the few examples. The problem statement, what we need to do. In industrial zone, polluted contaminants cover the surface of the insulator, which leads to intermittent flashover in combination with the corrosion causing insulator failure. It results in uninterruptible breakdown of the electrical power supply with heavy revenue loss. And this has been reported for the years and years, and nothing has been done so far. So we are going to provide a solution. Of course, we are looking for that. Objective of this research is
Investigation of the flashover characteristics of the damaged insulator to assess severity and the effect of the pollutants. Microscopic analysis of the damaged insulating materials to examine the surface and diagnose the change in composition. So remember one thing, now the research is not actually confined to only electrical or only to environment or only to single area. This is interdisciplinary. So you have to include some physical concepts, physics concepts, chemistry concepts, and electrical engineering concepts, environmental engineering concepts in order to, carry out the research. Development of the remedial solution. So we are looking for the remedial solution which might be sprayed before the installation of the insulators in the system, and which might be, the repellent of any kind of, the chemical compositions which actually causes the insulator failures. So this is actually preventive measures we need to do. To examine the performance of the remedial in terms of the flashover characteristics under artificial pollution with the equivalent salt deposit density technique. So this is very important. I have made it red. So there is a technique available in laboratories before, the installation and the deployment of the insulators in the system in order to see the life and the health of the insulator. And of course, we actually give the idea that how many years it may sustain in the system. Assessment of the economic loss due to the tripping and the faults due to the contamination failure of the insulator. This is also one of the important objectives which is to be carried out. Contaminants are deposited on the outdoor insulator, and of course what we need to do, conductivity or the equivalent salt deposit density, ESDD, this is the name of this particular test, expresses this contamination on the insulator surface. In laboratory, what we do, sodium chloride, tap water, and the distilled water are used for measuring the conductivity and ESDD. So literature review is done. So we did the literature review for the pollution flashover, the propagation, the deposition of the pollutants cover the surface, creates hydrophilic path when exposed to moisture. Hydrophilic path boosts the magnitude and duration of the leakage current. So this is required to be avoided, of course. The leakage current should not be there. And the surface discharge current resulting heat and, of course, in heat dissipation, of course. The heat dissipation forms dry bands in the high stressed region. This is the reference 3 and 4 which will be mentioned at the end. Deteriorate the material and eventually bridge the whole length of the insulator. Pollution flashover. इधर से ये आगे नहीं जा रहा यार, इसमें देखें आप, इधर से आगे लिटरेचर रिव्यू पे आ जाए, आगे आ जाए, आगे और आगे चले, यहाँ पे और आगे चले, इसमें यहाँ पे देख. The literature reveals that the soluble contaminants have more drastic influence on the flashover characteristics as compared to insoluble contaminants. So we have to identify all these, this is of course the part of the chemistry which is required to be done, the surface chemistry in order to all this. So I will be moving fast. Hydrophilicity and hydrophobicity, these are the two phenomena which are under consideration. Phobicity is actually required for the life of the insulator, the prolonging the life of the insulator. So we need to do something in order to increase the hydrophobicity, which is the reverse operation to the hydrophilicity. So we need to increase the angle. Of course, this is complete literature review. आगे चलें जी. ये इधर से मैच नहीं कर रहा, मैं तो इधर से पढ़ रहा हूँ, उधर से नजर नहीं आता. हाँ जी, corrosion. Apart from the flashover contaminants, when deposited on the surface of the material, different concentration of the salt is produced which allow the corrosion. So this is also the issue. Next, aging.
आगे चलें. Aging phenomena also plays a vital role as with the passage of time, weightage of the silicon oxide, aluminum oxide and ferrous oxide changes hence the properties do differ than it was at the start. So with the passage of time, these, of course, the aging will be actually adding all these chemicals. Ceramic materials mostly exhibit a brittle fracture behavior. Critical value of the fracture toughness is one which results in the instant failure. So I'll be moving to the results, of course. ये सारी डेफिनेशंस हैं. हाइड्रोफोबिसिटी इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. हाइड्रोफोबिसिटी है क्या? ये एक वाटर का ड्रॉपलेट व्हेन रेस्ट ऑन द सॉलिड सरफेस. द वेटेबिलिटी ऑफ दिस सरफेस डिपेंड्स अपॉन द बैलेंस ऑफ द एडहेसिव फोर्सेस. एडहेसिव फोर्स क्या होती है? बिटवीन द लिक्विड एंड द सॉलिड. एंड और एक होती है कोहेसिव फोर्स विच इज विद इन द लिक्विड. तो इसके साथ जो सा एक पर्टिकुलर वो ड्रॉपलेट जो सा सरफेस के साथ दैट मेक्स एन एंगल. तो हाइड्रोफोबिसिटी का एक खास एंगल होता है. जितना ये इंक्रीज करेगा उतनी इंसुलेटर की लाइफ बढ़ती है. दिस इज द रिक्वायरमेंट जिसको मैं आगे जाके कंक्लूड करूंगा. टेस्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं. फ्लैश ओवर टेस्ट किया जाता है लैब में. तो इंसुलेटर की टेस्टिंग है. इसमें आप वाटर रेजिस्टेंस को इंपीडेंस को सीरीज में रखते हुए इलेक्ट्रोड की कॉन्फ़िगरेशन के साथ यू अप्लाई द वोल्टेज अलोंग विद द ट्रांसफार्मर. सो यू विल बी इंक्रीजिंग द वोल्टेज एंड सी द फ्लैश ओवर वोल्टेज व्हिच विल बी कॉजिंग द फ्लैश ओवर ऑफ द इंसुलेटर. हमने जो टेस्ट किया वो दो हमारे पास इंसुलेटर थे. इसकी डायग्राम है. ये आगे आ गए थोड़ा सा. आप देखिए कि इन इंसुलेटर में एक हेल्दी इंसुलेटर था और एक जो सा था वो फ्लैश्ड ओवर इंसुलेटर था. तो हमने इन दोनों पे टेस्ट किए. आगे चलें. ये टेस्ट कौन कौन से कंडक्ट कर रहे हैं ये उसकी डिटेल है. ये सब स्टैंडर्ड में मौजूद है आईईसी के. तो वी एक्चुअली अप्लाइड द इंपल्स वोल्टेज. आगे चलें जी. आगे इंपल्स वोल्टेज नेगेटिव इंपल्स होता है, पॉजिटिव इंपल्स होता है. अब नेगेटिव इंपल्स और पॉजिटिव इंपल्स में देयर इज एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस. बट जो लाइटनिंग आती है, जो कुदरती तौर पे जो बिजली है आसमानी, वो पॉजिटिव इंपल्स उसके लिए होता है टेस्ट करने के लिए. बट सी दी इंसुलेटिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर द इंसुलेटर. और नेगेटिव इंपल्स इज एक्चुअली यूज फॉर द इंटरनल पावर. ऑफ कोर्स द इंपल्स इफ जनरेटेड ओवर देयर इन द सिस्टम. तो नॉर्मली लैब के अंदर ये नेगेटिव इंपल्स टेस्ट किए जाते हैं. ये डेफिनेशन है पॉजिटिव इंपल्स, नेगेटिव इंपल्स. और ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक टेस्ट जो उनसे हैं ये मेंशन किए गए हैं कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करना, डिसिपेशन फैक्टर है, इंसुलेशन पावर फैक्टर है, tan ऑफ डेल्टा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इफ यू माइट बी डूइंग सम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और रिसर्च ऑन द हाई वोल्टेज. tan ऑफ डेल्टा इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑफ कोर्स द ट्रांसफार्मर ऑयल इज एन हाइड्रोकार्बन और उसका टेस्ट भी बड़ा अहम है. तो ये मैं इसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो ऑफ कोर्स. तो डिसिपेशन फैक्टर और पावर फैक्टर दोनों को कंप्यूट करना, दिस इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आप देखें ब्रेक डाउन वोल्टेज. आपका जो ऑयल है ट्रांसफार्मर ऑयल, उसके भी इक्विपमेंट मौजूद है. दैट इज ऑल्सो डन. देन इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमने EDX को इस्तेमाल करते हुए इसके पीस को टेस्ट करवाया. जीस की मशीन थी. तो आप ये देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि सैंपल ए जो अनइफेक्टेड था, इफ यू कैन सी, इसके अंदर जो एलिमेंट मौजूद है एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ये अनइफेक्टेड सैंपल के अंदर होते हैं. जब हमने इफेक्टेड सैंपल बी को देखा तो ये दोनों कंपोनेंट इसमें गायब थे. इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन वी आर गोइंग टू हैव this unaffected sample, aluminum and silicon is actually having more insulating characteristics. मैं तो बहुत फास्ट चल रहा था. तो आप ये देखें कि this has been observed that aluminum and silicon, if present over there in the porcelain insulator, then of course we might be having more strength as far as the insulation is concerned, while it is missing in the affected sample. ये दोनों कंपोनेंट जो से आगे चलें. नेक्स्ट ये जो मैंने मार्क किया हुआ इस पे जो चलें आगे चलते हैं. ठीक है. In porcelain, we are just going to conclude. In porcelain, there are three main components: silicon oxide, aluminum oxide, and ferrous oxide.
Aluminum oxide boosts the bending strength, improving the mechanical and the electrical strength of the insulator. So this is actually requirement. Ferrous oxide is included in enhancing the dielectric constant and the loss tangent. Loss tangent, जैसे मैंने बताया है कि this is the dissipation factor. Observation is this: in sample A, which is unaffected, aluminum and silica both were present, but in sample B, which affected, both these elements are missing, showing the weakness in the insulation strength. तो इसका मतलब ये है कि this is very important to have the chemical composition according to these standards and to increase the insulation strength. This is important. Rubidium is actually another material which is having atomic number 37. The alkali metal of group 1 in the periodic table. Rubidium is very soft and the second most reactive metal which is easily ionized. इसका मतलब ये है कि ionization हो रही है, तो इसका मतलब this is not good for the insulator. तो हमने ये कंडक्टर से उल्ट इसका कॉन्सेप्ट है. It reacts violently with water to yield the solution of the rubidium hydroxide, which is conductive. तो इसका मतलब ये है कि rubidium जो सा है, वो दूसरा टेस्ट जो हुआ था उसमें जो हमने मशीन पे किया था, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट किया, तो उसमें पाया जा रहा है. Well, this is the explanation what I have told you, and this is actually the figure, which is the magnification is done 1000 टाइम. तो आप देखिए ये हमारा सरफेस नजर आ रहा है जो कि नॉर्मल है, हमारा मटेरियल अनइफेक्टेड नहीं है. और जब हम सैंपल ए को जब हम 10 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहे हैं, तो वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ द वीकनेस ओवर देयर. व्हाइल व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इफेक्टेड आइटम, वी आर फाइंडिंग द कैविटीज which is made on the insulator surface. तो cavity जो सा है, this is the starting point for the insulation failure. आगे SEM images show the micro size cracks, cavities on the surface of the flash disk. These cracks, cavities, though very small, can cause partial discharge. एक complete discharge होता है, एक partial discharge होता है, जिसको हम complete failure नहीं कहते. But this is the incipient fault. This is the start of the failure, as a matter of fact. जिसको हमें avoid करना चाहिए to increase the life of the insulator. तो ये सारा रेजोल्यूशन पर डिपेंड करता है, जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी ही आपकी डीप स्टडी होती जाएगी. ऑफ कोर्स वी आर लुकिंग फॉर दोज मशीन्स इन पाकिस्तान इन ऑर्डर टू गेट मोर प्रिसाइज आंसर. तो पोटेंशियल मटेरियल्स ये हमने रिसर्च पेपर से लिया है. नैनो पार्टिकल्स जिसमें SiO2 और एट MgO अगर हम एम्बेड कर देते हैं PMMA के साथ, जो कि एक केमिकल है पॉलीमिथाइल मिथाक्रिलेट एक्रिलिक, ये एक्रिलिक है, ये एक सॉलिड इंसुलेटर है. तो आप देखेंगे कि इसकी हाइड्रोफोबिसिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जब इसमें हम मिक्सिंग कर देते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड एट MgO के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, तो इसकी जो हाइड्रोफोबिसिटी है उसमें और इजाफा होता है. ये हमने एक्सपेरिमेंट्स किए और इसको यहाँ पे रिजल्ट जब PMMA को हम प्योर देखते हैं तो एंगल ऑफ हाइड्रोफोबिसिटी जो मैंने बताया था वो 78 डिग्री है, लेकिन ये इंक्रीज कर देता है परसेंटेज के साथ जब हम इसके साथ मिक्सिंग कर देते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो कि नैनो मटेरियल्स हैं. तो इसकी हाइड्रोफोबिसिटी जो सी है 115 दर्जे तक पहुंच जाती है. इसका मतलब ये है कि वी हैव इंक्रीज्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द इंसुलेटर टू बियर और टू विथस्टैंड द फ्लैश ओवर्स ऑफ कोर्स व्हिच मे अकर इन द पावर सिस्टम. ये इसका ग्राफ है विच इज टेकन फ्रॉम अ रिसर्च पेपर. इसी तरीके से मेगा वोल्ट पर मीटर ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ जो सी है फॉर द इंसुलेटर इज ऑलवेज टेकन इन वोल्टेज वैल्यू. तो आप देखेंगे कि मेगा वोल्ट है, किलो वोल्ट है. तो लॉग का ग्राफ इसलिए बनाया है वाई एक्सिस के ऊपर क्योंकि हमने इसको स्केल इन किया है, नहीं तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है. तो आप देखेंगे कि we are looking for different things and we are looking for actually a material to be devised which might be sprayed on the insulator to increase the life of the insulator. This is the requirement. तो इसके लिए और भी बहुत सारी रिसर्च की है which is still on. हाई प्लेटोन ग्लॉस वार्निश जो सी है दैट इज डन, और इसको हमने स्प्रे किया. ये हमारे पास वार्निश के स्प्रे से पहले कंडक्टर था, उसके बाद स्प्रे करने के बाद इसकी जब सरफेस को स्मूथ किया तो इसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ में अच्छा खासा इजाफा हुआ, जो कि अभी रिपोर्ट करना है हमने एक रिसर्च पेपर में. तो आप देखेंगे कि ये
जो इंक्रीज इन स्ट्रेंथ है, कोटिंग से पहले 74.2 केवी थी और कोटिंग के बाद ये 83.14 केवी हो चुकी है। इसके बाद आर्टिफिशियल पोल्यूशन टेस्ट भी होता है, दैट इज एक्चुअली परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंसुलेटर विच इज बीइंग यूज्ड इन द सिस्टम। तो ESDD जैसे पहले जिक्र हुआ, नॉन सोलेबल सॉल्ट डिपॉजिट डेंसिटी, लीकेज करंट मेथड जो सा है, दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द पर्पस, and of course this is not very expensive, can be done in different high voltage laboratories. तो इसके लिए सबसे पहले what we do, ESDD के लिए we actually calculate a factor which is multiplied. Of course this factor is depending upon the volume quantity of the distilled water, the solution conductivity and ambient temperature in the area of the disk. तो ये सारे जो से पैरामीटर्स हैं, यहाँ से ESDD को हम मेजर करके, और ये रेफरेंस नंबर 20 से 23 तक इसको बड़ा डिटेल में बताया है, जिसका मैं अभी जिक्र करूंगा। तो if pollution is taken as the independent parameter, then the relationship can be expressed in a simplified form. U is equal to A multiplied by S minus B. A is the constant related to the profile of the material and the insulator, atmospheric pressure and the type of the voltage. S represents the ESDD on the surface of the insulator, while B is the exponent characteristics of the influence of the pollution, and its value is 0.17 to 0.3 depending upon the situation or the pollution. The quantitative brushing method, dipping method and the spraying method are three polluting methods to settle the contamination on the insulator surface. The spraying method is much more effective for polluting the composite insulators in comparison with the other methods due to its small dispersion of the test results. तो soluble contaminants have more drastic influence, जैसे कि पहले बताया गया कि insoluble जो non soluble होते हैं उसका इतना ज्यादा drastic effect नहीं होता, जो mix नहीं होते उनको हम अलग कर सकते हैं। The reason is the mobility of the charged particles. तो ये एक chemistry की term है, charged particles की mobility कितने mobile होंगे, so this all depends upon this. Chlorides being more soluble are mostly used for the artificial pollution test. Chlorides को इस्तेमाल किया जाता है. However, the nitrate and the sulfates are also among the soluble, will also be sprayed for the pollution test. So ये lab की testing के लिए we are preparing our lab in order to conduct the insulation test on the solid insulation material for a liquid to be devised in order to spray before the installation. Utilization of research, of course, we have a target to serve Pakistan, and of course National Transmission and the Dispatch Company, NTDC, is the federal institution of our country responsible for transmitting electric power energy from generation plants to the distribution companies all over the country. So NTDC reported the issue is being faced in some 500 kV 220 grid stations located in industrial zone, millions of rupees being lost every year. So replacement of the equipment is too costly. What we need to do, we have to do something else in order to save money. So for the revenues saving, we are looking for this research to be conducted, to be completed, of course, soon, inshallah. And these are the references from where this research is being carried out, and thank you very much. If you have any question, तो मैं उसको shortly बता दूंगा. If you have, because this is the PhD work, the conclusion and the final result is yet to be, computed, but we are very close to it. But we are lack of industry, the labs, of course, the equipment जिसके ऊपर test करने हैं उसकी कमी है. तो we are sometimes looking for the ComSat Aptabad, sometimes UET Texla for the testing, sometimes UET Lahore. So, but it will be done inshallah and will be a good contribution to NTDC. Thank you very much. Thank you, sir, for your informative. We would like to request Dr. Shiraz to present souvenir to Dr. Muhammad Kamran.
Sir? Hello, can you hear me? Hello, can you hear me? Hello? Yes, sir, we can hear you. Oh, I'm sorry. So can I start my presentation? Sir, please wait for a few minutes, please. Just wanted to make sure the sound is okay? No. Yes, sir. Our third invited Okay. talk is efficient and reliable operation of insular power system with cleaner and greener generation by Dr. Joe P.S. Catalao from University of Porto, Portugal. Professor Joe P.S. Catalao is an IEEE fellow and a highly cited researcher in the field of engineering. He is also among the top 2% of scientists. He received the MSc degree from the Instituto Superior Técnico Lisbon, Portugal in 2003, and the PhD degree and habilitation for full professor from the University of Pira, Interior Covila, Portugal in 2007 and 2013, respectively. Currently, he is a professor at the Faculty of Engineering University of Porto, Portugal. He has authored or co-authored more than 530 journal publications and 450 conference proceeding papers with an age index of 95 and more than 34,000 citations, according to Google Scholars, having supervised more than 130 postdocs, PhD, and MSc students and other students with project grants. He was the General Chair of ICESE 2019 after being the inaugural Technical Chair and co-founder of ICESE 2018. He is a Senior Editor of the IEEE Transaction on Neural Network and Machine Learning Systems, and the IEEE Transaction on Systems, Man and Cybernetics Systems. Professor Dr. João Catalao was an IEEE ICECE Fellows Committee member in both 2022 and 2023. He was elected as a full member of Sigma Xi in 2023. Additionally, he earned recognition of an outstanding associate editor in 2023 for the IEEE Transaction on Emerging Topics in Computational Intelligence in 2021, for the IEEE Transaction on Power System, and in 2020 for the IEEE Transaction on Smart Grid. Furthermore, he has secured 5 Best Awards at IEEE Conference. Moreover, he was the recipient of the 2017 to 2023 FEUP Scientific Recognition Diplomas. His research interests include power system operation and planning, power system economic and electricity markets, distributed renewable generation, demand response, smart grid, and multi-energy carriers. He is joining us on Zoom today. Please welcome Professor Joe P.S. Catalao with big round of applause. Can you hear me correctly? Can you hear me? Yes, sir, we can hear you. I'm fine. Can you see my screen? You can see my screen, right? Yes, sir. So thank you very much. So good morning, everybody. Thank you very much for the nice introduction. So as mentioned, my presentation will be on efficient and reliable operation of nuclear power systems with cleaner and greener generation. I'll try to be as quick as possible. I have around 25 minutes, so I will ask our dear session chair just 2 minutes before or something, please send me a warning so that I know, okay? So I come from the University of Porto, from the Faculty of Engineering. We have more or less
50,000 people working in a 1 square kilometer mile, all in science, engineering, and technology. So the Faculty of Engineering of the University of Porto has around 7,000 undergraduate and master students, more than 1,000 doctoral students, more than 500 teachers. And a major important part is that more than 20%, and now increasing recently to 25%, comes from international community. So we are welcoming more and more people coming from outside Portugal, and this will be fantastic for us if people would like to come to Portugal. And this small region of Portugal, which is the north of Portugal, which is the Porto region, has 1/3 of the population, 1/3 of the industry, and 1/3 of the higher education. So it is probably the second most important region of Portugal, after, of course, Lisbon, which is the capital city. So I'm talking a little bit about this project. This is a singular project which I coordinated. This was a project which had around 5.3 million euro, and it was focused specifically on developing smart and sustainable insular electricity grids under large-scale renewable integration. So there were different islands, different sizes of islands that I will show in my next slides. So we have 7 European countries, so Portugal, Spain, Italy, Switzerland, Greece, Romania, and Cyprus. And we also consider different types and different sizes of islands. And as you can see, the big problem that we have from renewables is of course the uncertainty, and that sometimes when we need the most is then when we have the less. Imagine this case, when we have the lowest electrical demand, was actually when we had more wind generation during the night. And by the morning part of let's say, the lunchtime or even dinner, when we needed more electrical demand, is actually when the wind generation decreased. So there is an important thing is how can we cope with the uncertainty associated with the renewable power generation, in specifically targeting some islands. Sorry. We have the IEEE Spectrum magazine, which is the flagship publication of IEEE, which in an issue in 2015 discussed a very important phrase, which is the following: the smaller and the more isolated the power network is, the more difficult it is to maintain the needed instantaneous balance between electrical supply and demand, especially if we need to cope with the rapid expansion of carbon-free intermittent wind and solar power. And we also need to provide replicable results and scalable results. We need to consider the different island sizes and also different energy mixes. So the idea was to investigate what are the effects of a large-scale integration of renewables, also of demand-side management, in the forecasting, operation, and planning of insular electricity grids. By insular electricity grids, we mean not interconnected, not connected directly to the continent or to the main grid. So we developed the different operation and planning procedures, and we have different pilot sites, and so we were able to recommend scalable, replicable solutions to a series of challenges. So we have the insular DSO. We need to have different tools for power analysis, load forecasting, considering storage, scheduling, planning, etc. And for all of our DSOs, we need to consider, for example, all types of data: consumers' data, meteorological data, the data from the thermal units, the data from the system itself, and even the data from the renewables. And in the end, we also need to cope with the uncertainty of the load, the uncertainty of the renewables, and the long-term evolution of the grids, and even how can we engage our consumers, and all subject to KPI analysis, key performance indicators.
So this is for you to have an idea. You have so from very big islands to very small islands. You have, for instance, Crete, which is the biggest, one of the biggest islands in the Mediterranean Sea with a 650 megawatt peak load and different voltage levels. They have the transmission and distribution levels, and the generation mixes are also different. We have some islands where we have wind and PV. We have some other islands where we can have geothermal energy. We have other islands where we can have PV and wave. So different islands from large to small, from different voltage levels. In some cases, we don't even have a transmission system, we only have a distribution system and different energy generation mixes. So this is an example on our beautiful São Miguel Island in Portugal, which is named by the Archangel Michael, so literally means Saint Michael. So here we have the possibility of having the volcanic activity of the island, so we use the geothermal energy in this beautiful island across the Atlantic Sea in Portugal and São Miguel. A different island, for instance, is one of the biggest islands. It's actually the fifth largest island in the Mediterranean Sea, and we have a lot of potential for PV and also for wind, as we can see from the different maps that we see in this case. Portugal is totally different. This is a very, very small island near Sicily, and the main idea here was to install a full-scale prototype on wave energy, as I will show next. Also, the Canary Islands in Spain, so the idea here was to build a microgrid combining PV, wind, and diesel systems to supply the needs of the electrical system. A special island was added, which was the island of El Hierro, which was able to reach a very high penetration level of 80% because it was a very powerful combination of wind energy and pumped hydro. This is an excellent example on how we can achieve a very high penetration level. So why singular? Why this project? So we have high electricity costs, 2 to 5 times the values of continental grids. We have high levels of renewables that we need to use the best that we can. We have a high variability in consumption. Don't forget, some of these islands are touristic islands, so there are different influxes of people from summer to winter. They are too small to have an electricity market. They are even too small to have a transmission system. Some of them only have basically a distribution system, and there's an increasing need for balancing systems in our islands. So, one of the first part that I will show you is the power analysis, then we'll show a little bit of forecasting, operations and planning. In terms of power analysis, it was mainly focused on two aspects, the PV systems and the sea wave energy systems. So this is an example of PV systems. As we can see in a clear sky, everything is fantastic. But if we have variable sky, or as we call the broken clouds effect, where you have successive clouds passing through the sun, we have major interruptions of PV production. So we really need to take into account what happens to these PV systems. And then what we did, let's say we had simulations and we had real measurements, and we wanted to compare. So we imagine the red line shows our forecasts, and the blue line shows the measurements. And you look at this, no, the results are not so good. They look a little bit bad. There is some difference. Okay, what was happening here? So you see more or less the trend, but some difference. What is happening? It was a better result? No, it was not a better result. Actually, by using our forecasting tool, what we did is we were able to detect or pre-detect there was a failure in one of the portions of the PV arrays. So our tool was extremely useful for diagnosis purposes, and we confirmed this failure in the PV array. So through our model, this is what happened. When everything was fixed,
our forecast and our measure was perfect and our model was totally effective. So our models can also be in terms of anticipate potential problems that might happen. Another thing that was dealt with the wave energy. We had a full-scale prototype. You can see here the 1-to-1 scale model was made in Rome. Then we need to put it by the sea, etc. It is a fantastic part. Basically, I don't have too much time to detail, but the idea is to have a flywheel as a possible storage, and then let's say the oscillation of the waves basically feeds our generator, and here is how we can provide the wave energy. But this energy from the waves is very irregular. If you see the green light, the converted power, it's extremely irregular. So there needs to be some kind of smoothing. We need to put a smooth power into the grid, otherwise it will be chaos. Okay? So just to show you here some of our videos. So I don't know if you can see our videos. So this was inside our device. So this is a real device that we implemented, and you can see the oscillations of our device, and you can see, let's say, approaching our wave energy system. This was here, and basically how it works with the cooperation here from the Polytechnic of Torino in Italy. So inside the system, we can clearly see how basically the oscillation of the wave puts our generation at work from mechanical energy to electrical energy. So this is absolutely fantastic to see. So we also have, in terms of power analysis tools, because this is an idea of the Pantaleria island. So we made a powerful MATLAB tool, which was called DERMAT, which allowed distributed energy resources calculations. It has absolutely no restrictions in scalability, and it was fully replicable. So it is the most advanced tool in the world for the distributed energy resources calculations. It can handle different pattern representations. It can provide probabilistic load flow results, like in this case, for example, using Monte Carlo. It can provide probabilistic harmonic power flows, which consider the probabilistic density function as the function of each of the nodes of the network, and also the total harmonic dispersion. And it is also useful, our tool, in terms of assessing the reliability of the network for potential reconfigurations of the network. So this is our grid in Pantaleria, and this is what was made in terms of power analysis tools. We also did some forecasting. So in terms of forecasting, we need to have forecasting for renewables, for wind, for PV, etc., also for consumption. And we made the forecasting at a regional level, megawatt, substation level, and even the individual level of the renewables facilities. So we used the most advanced techniques that we had back then, which is the kernel density estimation forecast technique, which is a way to estimate the PDF of a random variable. So this is an idea of what we can do. So we have an uncertainty level, a forecast, and measurement. We can obtain different confidence intervals, different wind power scenarios, etc. And this is the platform development. This is what we have developed in our platform. And this is our real platform. So I invite everyone, please log in to singular.smart.net. And this is working in real time. Please allow me just 30 seconds to show you. So I will click on the website here, and I will open a new file. And can you still see my screen? If you open this website, this provides the forecast for the next 7 days, for instance, for the Azores Islands in terms of wind. We can select different bounds of uncertainty here, and it will update it accordingly to our files. Okay, it will be updated to our files here, and we can update it. Okay, so we can update the uncertainty levels. We can select different sources, for instance, consumption, and for instance, we can have different bounds
points here, for instance, from 90% to 20% confidence levels, and then we change it. So this is how we can implement an industrial tool. This is available online for everybody to see for different items, different characteristics, different forecasts. So this is totally online, free for you guys to see for different items. And this, as you can see, is, for instance, the global wind forecast for the next 7 days. So today is 7 March. You can see here the forecast, the uncertainty, etc. So it is amazing with different energy sizes. Okay. So this is an example of how we can basically make this forecast. So I invite everybody to please join this website to see our online industrial platform. So these are some of the snapshots that I showed you and things of the KPIs. In terms of now the scheduling tools, we need to take into account the forecasting. The forecasting now provides some errors, and the errors provide the generation, scenario generation. We can provide studies in terms of wind PV. We can cross-correlate different wind farms with different scenarios from an initial set and with a reduced set in terms of having less scenarios for, let's say, more computational process. Different PV scenarios, and then what does our scheduling tool do? We have the forecast, the unit data, network data, to put everything in the most advanced mixed integer linear programming models, and then we provide the unit-to-unit with the shadow prices and the power lines. So we use the most advanced detailed unit operation model in the world, okay? And then we have what? PV samples from different parts. We have basically the upscaling of the data. We use also scale the data from our systems. We collect the data in a MySQL database. We have all of the parameter selection in our industrial tool. And then, of course, we run our simulations in MATLAB guns, and we can produce every kind of reports, every kind of different things, or let's say, putting research into action into industry. So this is what we call the steps to the short-term electric power system scheduling tool, the most advanced tool in the world for power operations tools. And there are different applications. It is a standalone application. It uses a MySQL database. It provides different graphic analytics functions for the grid island, and we have in real time the operation of each of the thermal power plants, the wind generation power plants, etc. Okay? And this is a specific case. So you tell me, what is the benefit? Okay, you produce the most advanced tool in the world. Fantastic. What are the benefits for industry? These are a clear representation of the benefits. Usually, because of security reasons, we have around 20 CB in the bottom part. The real operation, we needed to curtail 23% of the wind for security reasons. With our new advanced scheduling tool, we reduce this curtailment to only 10%. And then what are the advantages? This is above the real operation, below is our scheduling. So if we use better the wind available, you know what we did for our company? We made a saving for the company of over 1.7 million euros per month. So we saved the company 63,000 euros per day. You can see the real impact from going from R&D to industrial products to put it to work and to make it for the benefit of the company, for the benefit of the people. To finalize the planning part, we also did the planning with the expansion of the grid. So we consider in the near future potential places for where we can put our wind units, where we can put our PV units and our battery units. So different expansion models can be used in terms of the planning, okay? And then what we did is we joined the RES, the renewable generation planning, also
with the distribution network planning. That's why we call it the joint renewable and distribution network expansion planning. And of course, if we work more on that service, the cost will increase. Okay? Dr. Joe? Yes, I'm It is very informative, but we have only 5 minutes left before the next Yes, session. so this is a small example from Canary Islands. So this is what we can do. Imagine different solutions. You can see here, we provide different solutions in terms of our expression model, and then we select where we can have the best expression model, and of course with these results in terms of the investment, the maintenance, etc. Finalizing now, I'm on the final 30 seconds. This is a real life picture from the road dispatch center of EDMO in Crete headquarters. So it was a wonderful day, very sunny day. We have the 50th, very beautiful day. This was our tools. You can see here on the left and the right, our forecasting and our scheduling tools. Basically, let's say this is the engineering from the company. It was logging into the system, logging into our tools. This is me on the left. This is the CEO of the company and everybody there in the company. And this is what we call a very successful technology transfer to industry. So basically, we go from R&D, the most advanced mathematical computational simulation tools in the world. We put it in practice in the industry, and we save millions and millions of euros to the companies. And this is what is a very successful technology transfer to industry. And of course, since these are the most beautiful islands in the world, it is always good. These are some beautiful pictures of our lagoons, our two coral lagoons in the fjord. You can see, imagine a lagoon of two colors, a green one and a blue one, which is amazing. So to finalize, we have research on new methodologies, mathematical models, and software tools, which are crucial for the efficient, reliable, and secure operation of the grids, including the high penetration of renewables. The aim was to provide sophisticated tools for forecasting, scheduling, and planning, and the ultimate goal was to have effective solutions, to have more security, more reliability, and more quality of supply. And I gave you a real example, a real-world example on how we can move from the theoretical development to real-life implementation. I hope you enjoyed my presentation. I tried to be as fast as possible. Thank you very much, Mr. Chairman. I'm sorry if I took a little bit too much of your time. I hope you enjoyed my presentation. Thank you very much. Audience, please, if you have any question, you may ask. Thank you very much. Dr. Joe, thank you very much. Thank you, Professor Joe P.S. Catalog, for your informative talk. Thank you. We would like to invite... Any questions from me? Thank you, sir. Thank you for your informative talk. I cannot hear any questions. Do you have any questions for me? I'm sorry, I cannot hear. Do you have questions? Yes, there is one quick question. Dr. Joe, yeah, the tool that you have developed is it transferred to industry in your country. Is that available for other countries or other regions? Is that applicable? Yes, well, our project, let's say our project was mainly focused on insular systems, insular grids, the non-isolated systems. So it works in basically everywhere else in the world, but it was specifically done for the insular grids. These are the toughest systems that you can have. The reason is why. Imagine, for instance, Portugal. We are interconnected with Spain, for instance. If there is a shortage of generation, we can ask our friends in Spain to import or to export energy if we need, okay? If you are in a continental system, let's say we have import or export the energy. The toughest place in the world to put your real-life tools to work is in an island, because if you are in an island, if you are to use the renewables, you don't have a neighbor to rely on. You have an
island. You have water everywhere. You cannot import energy. You cannot export energy. We have to be self-sufficient. That's why, for security reasons, most of these islands, they needed to curtail wind. Why? Because they don't want to jeopardize security. So they needed to curtail wind. Okay, they used the diesel generation. They used the thermal power systems to make sure that the lights are on in our islands. But what we showed in our project is, if we have more advanced tools, if we use the best of the best in terms of research and development, it's better to use better. If we provide better use of the renewables, we can decrease the curtailment. So instead of curtailing 23%, for instance, of the wind of waste, and 23% for security reasons, we only need to waste, let's say, 10%. And of course, using more wind is free, and diesel is not. We made a saving of 1.5 million per month, 63,000 euros per day. It's an incredible result for the companies on how we can use better our renewable resources, and how the usually phrase that we have is the following: if we can make it in an island, we can make it everywhere, because there is no perfect system in the world, because there is no import, there is no export of energy. Either you make it or you fail it. And if you risk putting the renewables at 100%, if by some reason there is a cloud, or if by some reason your forecast of wind fails, you have major blackouts throughout the island. So we want to ensure the security of the system, we want to ensure the reliability of the system while maximizing the use of renewables. This was our aim. So our project works in every country in the world, and we demonstrated our tools from theoretical developments to real-life implementation in the field in the toughest possible environment, in an island where we don't have the capability of important sport, but it can be done everywhere in the world. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Professor Joe, for your informative talk. Thank you so much. Any more questions? No, sir. Thank you, sir. Yeah, there are no more questions. Thank you. Thank you very much. No more questions, so I would like to thank the organizing committee. I would like to thank our chairs. I hope the presentation was useful for you, and I would like to wish you all the best for your prestigious conference. It was a pleasure and an honor for me to be with you guys here, and I'd like to thank you very much again. I wish you a pleasant afternoon, evening, and thank you very much. Thanks. Thank you. We would like to invite Dr. Bakar Mahmood to present the shield to our session chair, Dr. Muhammad Kamran. I hope this session was engaging for all of you. I want to offer my thanks to session chair, Dr. Muhammad Kamran, and all the presenters and audience. Now, next in program is very interesting panel talk, and Dr. Muhammad Farooq will be the moderator of the panel. Now, I will like to hand over the stage to Dr. Muhammad Farooq. Thank you. ये दे दो, ये दो पैनलिस्ट को दे दें।
Thank you very much, ladies and gentlemen, for your presence. I hope you have enjoyed all the talks and the poster and project competition or during the event. So now we have, last but not the least, the technical session of this very important conference, which is Industrial Academia Linkages in the Energy Sector. So we have today very great guests with us from industry as well as from academia and some policy makers as well. So first of all, I would like to request Mr. Robin Singh, who is the Managing Director of the Huawei Pakistan Digital Power. So I would like to request Mr. Robin Singh, please come on the stage to join us. Mr. Robin earned his Bachelor in Mechanical Engineering from Beijing University of Chemical Technology, China, and currently he is looking after the duties of Managing Director for Huawei Pakistan. Thank you. You can sit. Now next, I would like to request Colonel Retired Muhammad Irfan Aslam Saab. So Colonel Irfan Aslam Saab served the Pakistan Army for the 29 years. And currently he is the CEO of the Solar Tech Private Limited. Thank you very much, sir, for your time. Next in the queue from the industrial side, we have Engineer Fazan Wahid, who is seasoned professional and currently looking after the duties with the American Samoa. Sir, kindly join us on the stage. Thank you. Next we have Mr. Sheikh Shiraz Salim, who is from the industry side. Sir, please request to join on the stage. And next we have from the academia side, Dr. Ali Hussain Kazim, who is an associate professor in Automotive Engineering Center and currently looking after the duties of the Director of Automotive Engineering Center. Thank you very much, Dr. Saab, for accepting our invitation. So without any further delay, we will have this 45-minute session, and I will like to request all the panelists to please to keep your discussion according to the time frame we have provided so that we can conclude the session within the given time limit. Thank you. So as you guys know that the industrial academia linkages is a very important topic and we have to work on this. Unfortunately, in Pakistan, we are still growing and proceeding for looking all these activities that how the academia can facilitate better to the institutions and universities in Pakistan. And on the same side, when we visit the industries, they have the similar kind of complaints that how the institutions, they have a huge number of PhDs and expert people from different around the world. They are serving in the institution, they can solve the industrial problem. So in this regard, we have arranged this particular session. So without further delay, I would like to request, I will just float a question and then I would like to get opinion of our industry side people and then from the academia side as well. So how we will proceed that I will float a question and then I will request Mr. Robin first, then Engineer Fazan Wahid, and then Sheikh Shiraz Saab, then Colonel Saab, and then Dr. Ali Hussain Kazim Saab. So, my first discussion question is that while considering the socio-economic and very highly political challenges in Pakistan, compared with the energy demand patterns of Pakistan energy sector, how do you think that the industrial academia partnership in the energy sector be structured to prioritize sustainable development and inclusive growth with respect to typically our local context? So I will request from the Mr. Robin to start having some discussion on this one. You can use this one. Yeah? Good afternoon. This is Robin. I am from Hawaii, Pakistan. Now, It's working. It's working. so now I'm responsible for our digital power business in Pakistan.
Thank you very much to invite me participate today panel discussions. Yes, I work in Pakistan for more than 10 years now, and also I joined 3-4 times this event in UET. So I'm very familiar for UET schools. And regarding for this topic, I would like to share a few ideas. Yes, now due to the, I think they are the politicians, okay, that economic issues, I think in country-wise, the electricity, especially for power industry, I think the development still is unstable. So in Pakistan now, as data, we have around 40 gigawatt generations. But on the user side, maybe we have only 25 or 26 gigawatt supply. Many reasons. I think the major reason is from the transmission side, and also the inefficient or maybe the uncompatible the generation side. So this is the major issues now we are facing. And secondly, for our country-wise, because for Pakistan, from north to south, no matter for this grid system or no matter for this transportation, for example, the railway is from top Peshawar to Karachi. Even for our power system, it's similar. So it is one line. So compared with other countries, this is one of the risks. You can see the weak power distribution network. Simply, we said this sometimes looks like some single point of failure. So this is also the bigger challenge. And the third one is our major power plant. I mean, for generation side, we see either it's from hydro in north, either it's in coal power plant, it's in south. But our major power consumer, it is in Punjab. So in central, so it means all generation should be delivered to central. That means the generation and the consumer is unbalanced. So this is some parameters I saw in past many years. So because I'm working a lot in renewable energy, so I would like to also share some idea for renewable energy. I think for 10 years before, if we talk about for this solar power plant, we will be very, very pressure, because in that time, when we buy panel per watt, maybe it's $1, price is very high. If you want to have the solar power plant, the capex is very high. And even I remember the first time I met Mr. Imran in his laboratory. We are talking about how to develop this technology and also this solution in Pakistan. So, but now the thing is fully different. And the panel price, especially the supply now is very sufficient, and also the cost is very economic. That's why globally in last year, around 400 gigawatt delivered in globally, and in China, especially in China, it's more than 200 gigawatt. So this is something, no matter in Pakistan or no matter in any country, we are aware that renewable energy, especially solar power plant, is become more and more popular. That's why I said this is also one of the options in Pakistan to provide some optional power supply compared with the coal power plant, compared with this hydro power plant. And second, in Pakistan now, if we saw all solar power plant together, maybe it's less than 1 gigawatt. So our supply, our requirement is around 25 to 6 gigawatt. So this percentage is still very low, You know, now this carbon neutrality, even this carbon tax is also demand in Europe. So that's why be all industry, be factory, we also have to aware this.
for providing more green energy and more renewable energy power manufacturers. So this is also from international, the power to push this renewable energy development. So that's why this renewable energy will become major roles in now and the future. So this is all my opinion. Thank you very much again. Thank you. Thank you very much, Mr. Robin, for your great points about the solution. So now I will like to request Engineer Fozan Waheed. Sir, can you please use this mic? Yeah, sure. Assalamu alaikum, everyone. My name is Fozan Waheed. I belong to the wind energy industry here in Pakistan. First of all, I would like to thank the organizer and Dr. Farooq for inviting me here. I also graduated from this university 18 years back, so it's really an honor for me to come back and sit with this esteemed panels. It's really a great achievement for me. So now going back to the questions which Dr. Farooq has asked about how we can foster the linkage between the industry and the academia. So I have few points which I would like to share here, probably which will help to find out the answer which Dr. Farooq has asked. Number one, first of all, we need to see, because when we talk about this industry academia linkage, because this is what we talk a lot about it. And also in many platforms which I have attended in ICECE rule as well, that there is always a talk about, how we can, develop this industry academia linkage. First question we need to ask that whether from the academia platform, do we have the required resources, professors, teachers available that can provide the services which basically meet the industry standards. When we talk about this industry academia linkage, it's not only about giving the skilled engineers to the industry. It has a bigger picture. It has more than just providing the engineers. It has also linked with the what kind of a services we can and what kind of a need from the academia platform we can fulfill. So this is my first point. Second point is we have seen many companies, industry experts, they usually go to the universities, academia platform. They do also organize many training programs, skill development program, but I do not see it, a very it has a very long-term benefit. I do not see that. The reason is because it is not sustainable, because most of the industry experts going to the academia platform, probably it is not generating a long-term benefit, and it is not sustainable. To make it sustainable, this industry academia linkage, it is very important that it has to be backed with some robust policy framework. That policy should be backed with the government authorities, should highlight what are the sectors. For example, we are talking about the energy sectors. So what are those areas where industry needs support from the academic, and what kind of a support that academia can provide. And then we need to incentivize, there has to be some financial benefit for the industry to look at academia. In my knowledge, I do not see many experts who worked for the industry and then went back to the academia and support the industry in terms of providing different services. For example, if we are talking about energy sector, there are many areas where industry can look at the academia. For example, feasibilities of power sector, battery storage plants, grid modernization. So these are the areas where I see that academia can play an important role. But yes, academia has to provide the quality resource. And how it will provide the quality resource, quality services, when it is backed with some financial benefits. So in order to create that financial benefits, maybe some policies can highlight some tax incentive. If some of the design work being provided by the academia, maybe industry will get some benefits in terms of tax incentive. So there will be some financial
benefit would be created by the government. Then industry will look into the academia to get those services. And then at the same time, academia will also look for the industry expert to hire, to serve that need. And when they are on the board, they are not only serving the need of the industry, but also transferring the knowledge to the young engineers and producing a skillful engineers in the country. So in my conclusion, I would just say that industry-academia linkage has a huge potential, and that potential can further foster if we back this linkage with some policy incentive, some policy framework, then we would be able to see this strong bondage between academia and linkage and can put the Pakistan, in a more sustainable roadmap. Thank you. Thank you very much, Engineer Fawzan Vaisa, for your kind points. Now I would like to request Mr. Sheikh Shiraz Salim to have some viewpoint on the given question. Thank you. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शेख शिराज सलीम हूँ, अमेरिकन ग्रुप ऑफ कंपनी से। वी रिप्रेजेंट जनरल एयर कंडीशनर्स इन पाकिस्तान। American General is our own brand. It split units, special economic zone गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया हुआ है M3 इंडस्ट्रियल सिटी। वहाँ पे हम एयर कंडीशनर्स असेंबल करते हैं, LED TV असेंबल करते हैं। नाउ वी आर इनटू सोलर प्रोजेक्ट्स एज वेल। वी हैव स्टार्टेड आवर न्यू कंपनी अमेरिकन सोलर, which is providing modules. We have started. I was last 9 days in China as well, and looking for how we can transfer the technology of even inverters in Pakistan. तो बात ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। आई एम इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स। गवर्नमेंट हैज़ डिवाइड स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स, उसके क्लस्टर्स डेवलप हो रहे हैं। जिस तरह स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो पाकिस्तान में बनाया गया इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए, ठीक है। देयर आर 7 इंडस्ट्रियल जोन्स। बिगेस्ट वन इज द फैसलाबाद M3 इंडस्ट्रियल सिटी एंड इलामा इकबाल, जिसमें निशात हुंडई के ऑपोजिट हमारी अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक्स लगी हुई है। मैं आपका ही पार्ट हूँ। UET 6 साल रहा हूँ। आई हैव डन माय BSc ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंसेज फ्रॉम UET लाहौर बैक इन 2002, और फिर MSc विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने UET लाहौर से की। देन आई डिड MBA फ्रॉम लाम्स। तो जो इसी तरह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन बनाया जा रहा है, नास्ट में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन बनाया जा रहा है। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट के UET भी एक स्पेस प्रोवाइड करे जिसमें स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन आए, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट पार्टिसिपेट करें। आई हैव बीन 2 years बैक इन नास्ट। वहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्री के लोगों को स्पेस दी हुई थी, जिसमें उन्होंने PCB की मशीन मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लगाई हुई थी। यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स के साथ दे वर पार्टिसिपेटिंग। उन्होंने हमारे एयर कंडीशनर्स की PCB किट्स, मोबाइल्स की PCB किट्स के लिए पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में टेक्निकल नो हाउ नहीं है या जो है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हम लोग मेरे ख्याल में दुनिया की एडवांस तरीन कौमों में से कौम हैं, और स्पेशली जितने जो है इंटरनेशनल जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे आप पाकिस्तानी या इंडियन ही देखेंगे, ठीक है। इनके दिमाग वैसे भी ज़्यादा चलते हैं। तो मामला ये है कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का इधर क्लस्टर बनाया जाए। यहाँ पे जो है आई एम फ्रॉम सोलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स करते हैं। हमने 2002 में फेस रिकग्निशन, हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में फेस रिकग्निशन सिस्टम से, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुए, टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो गई। इट्स बीन 22 years बैक। 40 साल पहले हम लोग यही सोचते थे कि जी मोबाइल पे तस्वीर कैसे आएगी। अब किसी की सोच भी नहीं है कि जी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होगा। तो बात यह है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाए। एज फार एज रिक्वायरमेंट ऑफ सोलर इज़ कंसर्न्ड, 5 गीगावाट पाकिस्तान में सोलर, हम वी आर लैकिंग एनर्जी इस वक्त। द चीपेस्ट वे टू प्रोड्यूस एनर्जी इज सोलर। इट्स का एज फार एज पे बैक पीरियड इज कंसर्न, इसका हम इंपोर्ट करके अगर हम इधर टेक्नोलॉजी की कुछ डेवलपमेंट कर लेते हैं तो पे बैक पीरियड इज 2 years। इट कैन कम टू इवन 1 year एज वेल। और जो है
इसकी ज़रूरत जो है वो लाइक चाइना जैसे मुल्क में इस मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा सस्ती भी है, ठीक है, उसके बावजूद मोस्टली इंडस्ट्रीज आर शिफ्टिंग टू सोलर बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर। और एज फार एज यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो यूनिवर्सिटीज़ का तो मेजर यूजेज ही दिन के अंदर होता है। यूनिवर्सिटी के लिए तो ऐसे ही है जैसे ये सोना है, ठीक है, घरों में तो फिर बेशक रात में यूज़ होता होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी का तो मेजर यूजेज ही दिन में है जब मैक्सिमम इससे आउटपुट लिया जा सकता है। तो ये हमें अगर हम इसमें जो है वो स्टूडेंट्स के साथ स्टार्ट करें तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। मेरे ख्याल में बेशुमार स्टूडेंट्स को तो जो है वो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बैक इन 2001 गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जब हम जो है वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, जेम्स 2002 के नाम से, जिसमें उन्होंने चार स्टूडेंट्स की लिमिटेड कंपनीज बनाई थी। कई मेरे दोस्तों ने दे डिड मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स, बट ड्यू टू पॉलिटिकल कंडीशंस उसको जो है ना वो हो गया था, मिसहैप हो गया था, उसको प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। मिलियन डॉलर के बच्चों को प्रोजेक्ट मिलते थे। व्हेन यू स्टार्ट, ये फेसबुक के ओनर्स, ये बाकी सारे, अगर हमारे बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी दी जाए तो डेवलपमेंट इतनी कर सकते हैं कि जो है ये व्हाट्सएप, फेसबुक ये हमारे हों। चाइना में वीचैट चलता है, कोई व्हाट्सएप नहीं चलता, कोई फेसबुक नहीं चलता। अगर वो कोई भी नई टिकटॉक नहीं चलता, कोई भी चीज़ डेवलप होती है, यूरोप करता है, अमेरिका करता है, दे डिज़ाइन इट देयर ओन, दे डोंट गो फॉलो दैम। तो हम भी इस तरह फॉलो करेंगे तो दैट देयर इज़ अ बिगर प्लेटफॉर्म। सिर्फ जो है ना वो जोड़ने की ज़रूरत है। हमारे पास इतने सीनियर लोग, इतने काबिल लोग मौजूद हैं। डॉक्टर वकार साहब, आई एम थैंकफुल टू यू। डॉक्टर फारूक साहब, आई एम थैंकफुल टू यू। ठीक है, इतनी लोगों की रिसर्च है, इनको यूज़ नहीं किया जा रहा। ठीक है, ये इंडस्ट्री, चूंकि हमारी गवर्नमेंट के पास फंड्स की कमी है, तो प्राइवेट पार्टनरशिप साथ जो है ना अलाउ करनी चाहिए। जिस तरह मैंने आपको कहा कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इदारा है जो कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन हर जगह पे बनाता है। स्पेस होती है, सिर्फ स्पेस चाहिए, ठीक है, और उसमें इंसेंटिव्स उन्होंने दिए हुए हैं, फॉरेन करेंसी में अकाउंट्स ओपनिंग के दिए हुए हैं। जिस तरह हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, वो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन में। तो ये हर यूनिवर्सिटी में STZ होना चाहिए, और फिर जो है आप देखेंगे कितनी स्पीड में जाता है। सिर्फ नो हाउ नहीं है जिसकी वजह से जो है ना वो ये हम थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, वी आर विद यू एज वेल, हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें जो है वो नॉलेज ट्रांसफ़र करेंगे लोगों को, ताकि हर यूनिवर्सिटी में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स बने और स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो डेवलपमेंट की तरफ आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो नई चीज़ों की तरफ आएँ। तो आई एम सो थैंकफुल टू यू एवरीबडी। ठीक है, मुझे तो खुशी इतनी हो रही है कि मैं तो एलुमनाई होते हुए UT में आके आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ। आई एम सो थैंकफुल टू यू एवरीबडी। Thank you very much, Sheikh Shiraz Salim Saab, for your experience on your solar energy side. Now I would like to request Colonel Irfan Saab to shed some light on the renewable energy side, that how we can better implement the industry-academia linkages for the mutual benefit. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. I am humbled to express my view in front of students of UT, which is no doubt one of the most prestigious University of Pakistan. Thank you very much, sir, for inviting me and letting me express my views. Sir, the question which has been floated, it has 4 parts. So I shall be covering all these parts one by one and very briefly. First part is political, economical, and social stability. I will not talk much about this. We all are much aware of our political and economical conditions nowadays. And certainly, due to political and economical instability, the growth of industry of energy is less as compared to demand, due to which we all are facing shortage of energy and price hike, tremendous price hike, which is becoming very difficult for an average family to afford even domestic electric power. With this, the next part is demand pattern.
the power consumption can be divided, its demand can be divided into two patterns. One is industrial, other is domestic or residential, we can say. So in developing countries, it is always like this, that power demand in industrial sector is increasing, and in domestic sector it remains stable or its growth is very less. Unfortunately, in our country, it is other way. हम अपने घरों में, दफ्तरों में और नॉन प्रोडक्टिव जगहों पे तो बहुत ज़्यादा पावर यूज़ कर रहे हैं, एंड वी आर वेरी लैविश इन वेस्टिंग एनर्जी एज कंपेयर टू आवर इंडस्ट्री. तो it is really point of concern for all of us कि हम जिन इकोनॉमिकल और जिन हालात से गुजर रहे हैं, क्या मैं और आप इस तरह का लैविश एक्सपेंडिचर बिजली का करने के, पावर सेक्टर का करने के हकदार हैं, जो कि बिल्कुल नहीं है. I like to sit in a huge office with 2-3 air conditions, सेम घरों के अंदर. Unfortunately, हमारी growth towards domestic sector, power consumption is more, or as compared to industrial sector, which should be vice versa. The most important part of question, that is industrial academic partnership. किसी भी डेवलपिंग कंट्री को या डेवलप्ड मुल्क को देख लें, वहाँ पर तमाम रिसर्च की बेस जो है वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसके स्टूडेंट्स हैं. आप किसी भी जगह पर देख लें, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को वो तमाम सहूलतें जो गवर्नमेंट ने या इंडस्ट्री ने, जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, देनी चाहिए, वो नहीं दे रहे. हमारा इंडस्ट्री का एक काम बनता है जिसको हम CSR भी कहते हैं, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मेरा काम बनता है कि अगर आई एम एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री, तो मैं स्टूडेंट्स को अपने तमाम जो कंसर्न्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आवाज नहीं आ रही सही, ठीक आ रही है. तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हम यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दें, उनको रिसर्च के लिए फंडिंग दें, और उनको जो बेसिक हमारी प्रॉब्लम्स या हमें जो भी इश्यूज हैं वो अपने स्टूडेंट्स से पहले उनका सोल्यूशन लें. एंड आई टेल यू दिस थिंग, मेरे सामने बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे हैं. जो स्टूडेंट्स नए इनोवेटिव आइडियाज और वर्केबल आइडियाज दे सकते हैं, वो बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग शायद वहां तक नहीं पहुंच सकते. तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. तो अगर इंडस्ट्री स्टूडेंट्स के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ कॉर्पोरेट कर रही है और इनको फंडिंग दे रही है, इनको सहूलत दे रही है, इनको असेस दे रही है टेक्नोलॉजी की, इनको इंटर्नशिप्स दे रही हैं, स्कॉलरशिप्स लगातार दे रहे हैं कि आप मुझे 2 साल के अंदर ये चीज़ डेवलप करके दें, सॉफ्टवेयर डेवलप करके दें, लोगों को एजुकेट करने का तरीका बताएं, तो डेफिनेटली इट विल हैव वेरी गुड इम्पैक्ट. और इसमें आई विल नॉट से कि ये गवर्नमेंट का कसूर है, इसमें मेरे जैसे लोगों का भी कसूर है कि वो अपना रोल सही तरीके से अदा नहीं कर रहे. बच्चे अप्रोच करते हैं, आप लोग छुट्टियों में मुख्तलिफ कंपनीज में काम करने के लिए, तो वहाँ पर असेस नहीं दी जाती, नेग्लेक्ट किया जाता है, और अगर दे भी दी जाए इंटर्नशिप, तो वी नीड टू वर्क ऑन इट वेरी सीरियसली नाउ, क्योंकि नाउ वी आर एट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. अभी हमारे पास आज भी हमें अपने आप को सीधा करना है ताकि हम ये अपने एनर्जी क्राइसिस और बाकी क्राइसिस को मैनेज कर सकें. आखिर में जो चौथा पार्ट था इस सवाल का, that is prioritizations for sustainable development. नो डाउट सस्टेनेबल पावर के अंदर सोलर है, ये विंड है, और ऑलरेडी हमारे पास कुछ डैम्स हैं, और सर्टेनली ये जो थर्मल और न्यूक्लियर, ये दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल एनर्जी. तो
अगर इंडस्ट्री स्टूडेंट्स के साथ अच्छे तरीके से कोऑपरेट करती है, उनको रिसोर्सेज एलोकेशन करती है, फंड्स देती है, तो आई हैव नो डाउट कि आप लोग डोमेस्टिक यूज़, इंडस्ट्रियल यूज़ और बाकी इस्तेमाल के लिए यू पीपल कैन कम आउट विद वेरी गुड आइडियाज़, जो कि मेरे जैसे बूढ़े दिमागों में तो नहीं आते। तो इसलिए आई रियलाइज दिस थिंग वी मस्ट कंट्रीब्यूट इनटू दिस अलॉन्ग विद गवर्नमेंट। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को कोई पॉलिसीज बना देनी चाहिए, जिस तरह मेरे ऊपर टैक्स की पॉलिसी है कि अगर मैं इतने साल का टर्नओवर है तो मैं इतना टैक्स दूंगा, तो मेरे पे उस टैक्स के साथ एक गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्लिगेशन लगा देनी चाहिए कि जिसका टर्नओवर इतने मिलियन है वो इसमें से इतने % यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को फंडिंग देगा, तब ही ये निज़ाम कुछ ठीक होना शुरू होगा। अदरवाइज अगर हमारे पे छोड़ दिया जाएगा और सिर्फ मेरे पे ही या इंडस्ट्रियलिस्ट पे कहा जाएगा तो शायद इतनी ज़्यादा चीज़ें ठीक नहीं होंगी। This is all from my side. Thank you. Thank you very much, Colonel Saab. You have highlighted all 4 points related to the subject matter. So now I would like to request from the academia side, Dr. Ali Hussain Kazim, who is actually the director of our Automotive Engineering Center at University of Engineering and Technology, Lahore. So basically what we have got from the industrial experts, that they have mentioned that the academia has to provide the quality resources, the government should benefit the financial way to the academia people, and then the academia need to hire the technical experts from the industry as well. So as well as the Colonel Saab mentioned that there is some fault on the industry side as well, that they may go sometime neglection from the student request or something like that. So how, Dr. Ali, you think that these particular outcome which they have highlighted, that how we on the academia part can play our role to facilitate the industry in the regard that our student can benefit from the industrial sectors? Thank you. Assalamu alaikum. Thank you for giving me the opportunity to speak. First of all, this session is about industry, academia, and linkage. And if I have to sum it up for UET, yesterday's talk of Dr. Waqar, of how he highlighted the various initiatives and how he is providing service to the people of Pakistan from UET itself, is a testament that academia can deliver, academia is delivering. So thank you, Dr. Waqar, for delivering, and thank you for arranging this conference, which is a connection between industry and academia. So thank you, Dr. Waqar. After that, I would like to thank Kashif Bashir Saab for inviting me as a panelist for this session. And then moving on to what Robin said that we have a weak power distribution. Pakistan is very unique in this way that we don't actually need a strong power distribution. Why? Because we have a solar potential throughout Pakistan, which can indigenously provide energy to all the areas. So he mentioned solar power plant. That can be broken down into 2 things: concentrated solar power, which is already commercial, which Pakistan needs to adopt very fast. And the other thing that Pakistan needs to work on or do research is on thermophotovoltaics. So I'll be happy to share that we at UET have done work on thermophotovoltaic, which will eventually lead commercialization maybe in next 10 to 20 years, which is an industrial scale of conversion of solar electricity. So like Colonel Irfan Saab said that हम घरों पे तो बहुत इन्वेस्ट करते हैं, लाइटें बहुत हैं, अब सोलर पैनल लगना शुरू हो चुके हैं, सब पैनल की तरफ आई जा रहे हैं, लेकिन हमें इंडस्ट्रियल स्केल पर आने की जरूरत है. फॉर दैट ऑफ कोर्स गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडेमिया सबको मिलकर चलने की जरूरत है. Then Fuzan mentioned that if we have an industry academia linkage, हमारा mismatch reduce हो जाएगा, that industry would find the students readily. So that is why we need to improve industry academia linkage.
Then he also mentioned financial benefits, tax incentive. Colonel Infaar Saab also said कि हमारे टैक्स से कुछ ले लें. मैं कहूँगा जो ये कंपनियां टैक्स देती हैं, मतलब टैक्स लेती हैं, for example, कि हमारा जो if we recharge our phone, a certain amount of tax is deducted. A portion of the telecom tax funds Ignite, which is an example which other industries can follow. For example, recently I was visiting few industries and they were like, we require research, require research in automotive. And I asked them, if a certain portion of your tax goes to the government of Pakistan and they distribute it in an institute or somewhere, institute or make a new institute, so will you be ready? You're like, of course, if our tax, only a portion of it, 1% or even less can do that. So this is already, Ignite is an example of that happening, but we need to do it more. And then I would just end on industry-academia linkage. The word academia camouflage two major stakeholders which are found in a university, the researchers and the students. The researchers need to go to the industry need to visit us. All of us are, all engineering institutes are technology zones. UET, if we can talk about UET has the most foreign qualified faculty compared to all other engineering institutes. We have the highest ratio. So alhamdulillah, same goes for other places as well. So we are all technology zones. We just need to open our doors and hopefully industries would visit and we can visit them and establish strong ties. So what will happen? The end goal is the students are only here for 4 years. The next 30 years, they'll be in some industry. So if we can have a strong partnership, in the long term, it would be benefiting the industry and it will make our alumni very strong. So hopefully Pakistan's conditions will improve. We would invest in engineering projects and there'll be more influx of engineering and there'll be more engineers producing. So thank you all. Thank you so much. Thank you very much, everybody, for your kind suggestions. So now I would like to request another question, and I will humbly request that do not take more than 3 minutes because we have Higher Education Commission Chairman with us very shortly, who will be the chief guest of the today event. So the next question of discussion is that in the light of policy and regulatory framework in Pakistan, how can industry-academia linkages in the energy sector address energy security concern, promote renewable energy adoption, and derive economic competitiveness? So I will request to have some sort of short-term or long-term policy points from your side, from the academia side as well as from the industry side, so that we can prepare a working paper for the government and the policy maker and can be forwarded accordingly. So again, request for your kind consideration regarding the time. Thank you. Oh, okay, thank you. Actually, for one industry, if one industry have the faster development or booming development, typically require a few things. Number one, we should have the potential for market share, volume. Number two is technology, product and solution. Number three is this ecosystem. And number four is talent. I mean, the knowledgeable, skillable engineers. So considering for Pakistan, for this policy, to be frankly, I'm thinking the government should have a policy. Number one should be promote the end user to have the more economical power. And number two should be government give more policy to promote such as UET, such as NED, university, to training, to educate more scalable talent. And number three, definitely government should have some policy to support this industry, to develop this power, or you can see the energy industries. So by this, market is here.
we have enough, we have a sufficient space, we have sufficient this market share, then we have the scalable engineer, then we also have the good policy to support each other in ecosystem. Definitely this will be fast for the booming. So this is all my idea. Thank you. Thank you very much. Now I will request Engineer Fawzan Waheed Saab to please shed down some line. Thank you, Dr. Farooq. I think your question has three important points. One is you talk about energy security, the second is renewable development, and the third one is economic competitiveness. We know that Pakistan is not an energy secure country because we are so heavily dependent on fossil fuels. Our energy import bill of 2023 is $17 billion. अगर हम और इससे पीछे जाएं तो वो $20 billion हम क्रॉस कर चुके हैं. So the important thing is that we make ourselves less dependent on the fossil fuel and make ourselves dependent on indigenous resources, जिसमें wind, solar, biomass, hydel ये technologies आ जाती हैं. अब अगर हम बात करें energy security की, it's not only about making ourselves dependent on these new technologies, wind, solar. It's also important that कि जो ये technologies हैं ये locally develop हो रही हो, local manufacturing हो रही हो. अब पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो जो भी सोलर या विंड के प्रोडक्ट लगते हैं उसमें मेजर प्रोक्योरमेंट जो है वो बाहर से आ रही है. तो नेचुरली इनकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी डेवलप दीज इंडस्ट्री हेयर इन पाकिस्तान. अब उस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए वी नीड टू इंसेंटिवाइज इंडस्ट्रीज. First of all, there has to be a continuity of the project because there has to be a demand in the market. For being an investor, there has to, I will be looking forward to what exactly the demand in the market so that I can invest here in Pakistan और मैं ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाऊं. तो इंसेंटिवाइज जो है ना उस सेक्टर को करना बहुत ज़रूरी है. हमारे पास एग्जांपल है, शेख साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, कि अगर मैंने यहाँ पे पीवी असेंबली प्लांट लगाना है तो नेचुरली जो पीवी असेंबली प्लांट पाकिस्तान के अंदर लगेगा तो उससे जो पैनल्स मैन्युफैक्चर होंगे वो एक्सपेंसिव होंगे. तो यही वजह है कि जिसकी वजह से हमें चाइना से इंपोर्ट करना जो है वो ज़्यादा इकोनॉमिकली वायबल लगता है एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चर और असेंबल सोलर पैनल इन पाकिस्तान. लेकिन हमें अगर उसको इंसेंटिवाइज करें तो इन दिस स्टार्ट इट वुड बी एक्सपेंसिव बट विद द पैसिव टाइम द इकोसिस्टम विल डेवलप एंड मेक इट कम्पेटिटिव. तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो हमें शुरू में इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा ताकि हम अपने आप को एक्सटर्नल एलिमेंट्स के ऊपर अपने आप को लेस डिपेंडेंट रख सकें. और नेचुरली रिन्यूएबल अडॉप्शन की बात तो वहाँ पे आ जाती है. अब एकेडेमिया यहाँ पे किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकती है, मैंने पहले भी जैसे अर्ज की कि एकेडेमिया स्पेशली यूईटी, ऑफ कोर्स यूईटी इंजीनियर्स पाकिस्तान में बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं. आई एम ऑल्सो फ्रॉम द यूईटी, बहुत अच्छा उनकी आउटपुट होती है. बट नेचुरली नॉट जस्ट, अब एकेडेमिया का रोल इससे थोड़ा सा और आगे निकलना चाहिए जिसमें सिर्फ बेस्ट इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने के अलावा हम इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, डिज़ाइन में, फिजिबिलिटीज़ के अंदर एरियाज आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास फ्रेश माइंड है, इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे विच कैन हेल्प इंडस्ट्री टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी इन देयर सिस्टम. तो ये वो एरियाज हैं जहाँ पे आप अपना रोल प्ले कर सकती है एकेडेमिया, ऑपरेशन एफिशिएंसी में, प्लानिंग में, पॉलिसी डेवलपमेंट में. तो एकेडेमिया शुड कम फॉरवर्ड एंड लुक फॉर दीज एरियाज. लेकिन एकेडेमिया कैसे आएगी आगे और इंडस्ट्री एकेडेमिया की तरफ कैसे देखेगी, ये मैंने पहले भी अर्ज किया कि वी नीड टू इंसेंटिवाइज दिस लिंकेज. इंडस्ट्री के लिए एक फाइनेंशियल बेनिफिट होना चाहिए, एक टैक्स इंसेंटिव्स होने चाहिए सो दैट दे, इफ समथिंग इज बीइंग डन फ्रॉम द एकेडेमिया लेवल, आई वुड गेट सम टैक्स इंसेंटिव्स इन माय कॉर्पोरेट रिटर्न्स. तो इसी तरह ये लिंकेज मजीद स्ट्रांग होगा और पाकिस्तान ग्रो कर सकता है. और जहाँ पे हमने इकोनॉमिक कंपेटिटिवनेस की बात की, जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी, एक इकोसिस्टम डेवलप होगा तो नेचुरली लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आई एम सॉरी टेकिंग टू मच टाइम. डेस्कॉन एक इंजीनियरिंग फर्म है पाकिस्तान के अंदर, उसने एक टावर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई विंड प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन टावर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कुछ साल के बाद वो बंद हो गई. द रीज़न इज़ के टावर जो मैं चाइना से इम्पोर्ट करता था वॉज
cheaper than developing tower here in Pakistan. Reason क्योंकि मुझे प्लेटें इंपोर्ट करनी पड़ती थी, मुझे उसका पेंट इंपोर्ट करना पड़ता था, मुझे वो मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ती थी. तो हमें अगर अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है तो इन द स्टार्ट वी नीड टू इंसेंटिवाइज. अगर हम इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे तो वो यही हाल होगा जो डेस्कॉन की टावर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का हाल हुआ है, वो कुछ अर्से बाद बंद हो जाएगी. तो अगर वो इकोसिस्टम डेवलप होगा, कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोजेक्ट होगा, तो कोई प्लेटों में भी इन्वेस्ट करेगा, सोलर पैनल के केस में कोई उसका गिलास बनाने में भी इन्वेस्ट करेगा, सिलिकॉन सेल में इन्वेस्ट करेगा. इकोसिस्टम will come later, but first we need to incentivize the sectors, and ultimately you will see the economic ecosystem will be developed afterwards. Thank you. Thank you very much, Engineer Fazan Wahid. Now I will request to Mr. Sheikh Shiraz Salim to please have few points regarding the policy measures, that how we can prepare the policy points regarding the energy security concerns. Thank you. Acha, the first time I attended solar exhibition back in 2017, April 2017. टेक्नोलॉजी सोलर पैनल्स की लास्ट 6 इयर्स में बड़ी ड्रास्टिकली चेंज हुई है. कई सोलर कंपनीज चाइना की भी बंद हुई हैं, इसमें इनोवेशंस आती रही हैं. अब को सैचुरेशन पॉइंट पे आना शुरू हुई है कि टेक्नोलॉजी में कोई बहुत वास्ट डिफरेंसेस नहीं हैं, ठीक है. और उसकी वजह से जो है ना प्राइस कट भी उसमें बहुत ज़्यादा आया है. इंडस्ट्री एज फार एज सब लोग कह रहे हैं इंडस्ट्री को इंसेंटिव दिया जाए. बात यह है कि इंसेंटिव दिया गया है स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स की सूरत में, बट दे हैवंट डेवलप्ड. यूनिवर्सिटीज़ के पास स्पेस मौजूद है, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन उधर बनाए जाएं, इंडस्ट्री वालों को स्पेस प्रोवाइड की जाए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आप डेवलपमेंट करें इधर, ठीक है. डेवलपमेंट के बाद उसके बाद उसमें स्टेप्स रख लिए जाते हैं. जिस तरह आपकी व्हीकल इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्रीज को इन्होंने दे स्टार्ट विद 10% और 5% रॉ मटेरियल्स की इंपोर्ट से स्टार्ट, 95% की रॉ मटेरियल इंपोर्ट से स्टार्ट करते हैं, एंड दे हैव टू फाइनलाइज के 70% पार्ट्स विद इन 5 years. The 2000 auto policy, since I am an industrialist, I have seen many ways कि 5 साल में they have to come back to from 91% 5% parts import to 30% parts. इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में भी हो रहा है. इस सोलर पैनल की इंडस्ट्री में इसी तरह टेक्नोलॉजी के जो है वो स्टेप वाइज 5 year का रोड मैप दिया जाए. उस रोड मैप के तहत टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए. टैक्स जो कि 0% है बाहर पे, उसको बढ़ा दिया जाए वक्त के साथ साथ, और लोकल जो है उसको प्रमोट किया जाए. बाकी वो जो है डेवलपमेंट के लिए तो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन बन जाए, तो वही लोग, वही बच्चे, वही हमें जो है जो इधर काम कर रहे होंगे वही पार्ट बनेंगे बाद में इंडस्ट्री का. जो डेवलप्ड इंडस्ट्री होगी, हमें जॉब्स वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब व्हेन वी आर डेवलपिंग एवरीथिंग ओवर हेयर. तो जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना कोई रोड मैप, कोई जो है वो जिस तरह टर्किश में, तुर्की में हुआ है, 10 years में उन्होंने एक रोड मैप दिया. दे हैव टू मूव टू इंडस्ट्री, ठीक है. जो उनकी करेंसी और जो उनका था सारा रोड मैप के तहत, हमारा अनफॉर्चुनेटली 1973 की जो है नेशनलाइजेशन के बाद इंडस्ट्री में लोग पर्सनली इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते. दे इन्वेस्ट ऑल बैंक्स मनी. मैं तो 100% मैंने तो जो भी अर्न किया आज तक वापस इसी इंडस्ट्री मुल्क में लगाया, क्योंकि मेरा तो जीना मरना इधर ही है. लेकिन लोगों को डर इतना पैदा हो गया हुआ है कि जो है कि पता नहीं दोबारा कभी नेशनलाइजेशन ना हो जाए. तो गवर्नमेंट इस चीज़ का भी जो है वो एक कोई प्रोटोकॉल दे कि जी ऐसा कभी नहीं होगा, गारंटी दी जाए. और फिर देखें कि इधर एप्पल के भी प्लांट लगेंगे, इधर सब कुछ लगेगा. ये हमारी कंट्री सेंट्रल लोकेशन में, इससे आइडियल लोकेशन नहीं है. चाइना सीपैक के प्रोजेक्ट्स क्यों कर रहे हैं? इससे ज़्यादा सेंट्रल लोकेशन पूरी दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है. जो अल्लाह ताला ने हमें डीप सी पोर्ट्स दी हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, बस सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो रोड मैप पे आने की बात है. बाकी तो बहुत अल्लाह का करम है. Thank you. Wish you best of luck, everybody. Thank you very much, Sheikh Shiraz Saab, for your policy points. Now I will request Colonel Saab to please shed some points, very brief and very short. Thank you.
Thank you very much, sir. Most of the points, they have been very well covered by the panelists. I shall be just touching few things. To my opinion, we need to formulate the policies for efficient use of energy. Not only policy, we need to educate industry and every resident of Pakistan that how to conserve energy and how to efficiently use it. And after that, till that time, we are again talking, again and again, we are talking about industry and academia linkage. It all depends on support, which industry is given, which government is giving, and which the formulation of the policies. आप आज policies बना दें, इनको impose कर दें और target दे दें, तो ये हमारे बच्चों में और हम लोगों में बहुत potential है. वो ये तमाम जो concerns हम बार-बार discuss कर रहे हैं, दिनों में इनके सॉल्यूशंस निकल आएंगे और एनर्जी को सबसे पहले हमने कंजर्व करना है और उसके बाद सर्टेनली इन्हांस करना है और अपनी ज़रूरियात को पूरा करना है जो कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल इफ प्रॉपर पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड एंड फंडिंग्स आर मेड अवेलेबल. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much, Colonel Saab, for very precise and brief discussion regarding the question. Now I will request Dr. Ali Kazim regarding his point of view from the academia side, that how we can prepare some policy points regarding this. Thank you. So from the academia side, the point of view is Pakistan is energy secure. We have a tremendous amount of solar, wind, water energy. So we are energy secure, but we are a very technology infancy stage. We need to invest in technology so we can make use of the energy we have. Robin mentioned we need ecosystem, and together industry academia linkage needs to strengthen, and that can be strengthened, which Fozan mentioned, that we need to incentivize. The tax collected from the industry should be given to the universities or research centers. And public partnership, which Raz mentioned, that for the small business owners, the public-private partnership is the way forward so that everyone can develop. And Colonel Saab also mentioned that we need to incentivize tax. So I think that's the way forward. Thank you. Thank you very much, everybody, and thank you very much for our experts. So just as a concluding remarks, from the conclusion of the discussion from our experts, that what is the way forward for building the industry academia linkages, and especially in the energy sector with respect to these 2 days international conference on energy conservation and efficiency. So we have some points as a summary, that for bridging this gap, basically we need some potential for market share. Then we should have some ecosystem to facilitate both the industry and academia. Then, as Mr. Robin mentioned, that there should be the talent and the engineers what we are producing on the university side, and then there must be some support to promote the end user support for the industry, as well as the facilitation support for the academia side from the government. And similarly, as our industrial expert colleagues mentioned, that the incentivization of the linkage for both sectors is very much necessary for bridging this gap between the industry and academia. And similarly, the Colonel Saab has summarized all these points mentioned by our external experts. And the Dr. Ali Kazim mentioned about the public-private partnership. This is very important. So with these points, these are not only these points, but we still have many points, and you can say the restriction of our panel discussion session, that we have a limited time frame, and we are running short of time for our next round, and especially the excitement from the student side, that they are looking for their competition results actually from the poster and projects. So just as a last question from our experts, a very brief question, that what particularly you think, so that how you can
in your individual as well as your professional capacity, you can facilitate our students who are sitting in front of you. So maybe some sort of trainings, some sort of internships, and how you can guide them that how they can be facilitated for getting the job market, because I have seen many faces from the final year classes, they are just about to graduate in few months' time. So I will request our experts taking the opportunity of the time, we have just 5 to 10 minutes actually. So how you think that at your own end, how you can facilitate our student from your industrial representation? Thank you. Thank you very much. Actually, the same question, I just sent a message to Mr. Imran. If you ask Mr. Imran, he must give the good answer. Yeah. So I just repeat, I said, I think I should appreciate our UET team, especially Dr. Waka and Mr. Imran team in past many years, give us a lot of support, especially in 2021. 2022, I think we have a lot of training for local engineer and installers. And for this year, we have a same plan. We will do country-wise development and training for all installers, no matter in Lahore, in Multan, in wherever we have UET campus. We must join hands and deliver this knowledge, and also provide more training, and also provide our product solution to all students or installer engineers. So I do want your support also, and I think this will be a win-win solution for us and UET, right? Thank you, thank you. That's really great and really appreciated. Similarly, I will request the other experts as well that how you think that you can facilitate the audience students over here in your individual as well as your industrial capacity. Thank you. I think यूटियंस का वैसे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो मैंने खुद भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखा है कि यूटियंस हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड व्हेन दे गो आउट इन द मार्केट एंड लुक फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज so that bond we need to trust on that bond and find and create those opportunities for the students here in UET to get them connected with with those engineers who have already passed out in different sectors. और उसमें मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर्स टीचर्स का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि टू इनवाइट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इन देयर नॉर्मल सेशन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के जब हों तब आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की विजिट्स को ज़्यादा प्लान करें ताकि देयर वुड बी अ लिंकेज बिटवीन द पास आउट स्टूडेंट्स एंड दोज हु हैव ऑलरेडी पास्ड आउट आई वुड से जो कि मैंने व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग फ्रॉम लाम्स तो मैंने लाम्स में देखा था कि आप जो भी आप सेशन आपने प्लान किया होता है जो कोर्स आपने प्रोग्राम प्लान किया होता है उसमें इन ऑर्डर टू गेट द इंडस्ट्री व्यू और एक प्रोफेशनल व्यू लेने के लिए आप इंडस्ट्रीज के लोगों को इनवाइट करते हैं that is also an opportunity to connect with the industry player and understand what exactly industry need is and how can our fresh graduates can modify or upgrade their skill to match those industry needs. तो वो बड़ा important है तो I would put this responsibility on the teachers to create that linkage or at least create this opportunity for us to come again and again and build up this bond. Second, as I mentioned earlier, UETs have a very strong bond. और inshallah there are many opportunities not just in Pakistan, outside Pakistan as well, because आपको पूरी दुनिया में UETs नजर आते हैं. तो उस बॉन्ड को जो कि ये 4 साल हमें ये बॉन्ड क्रिएट करने के लिए देते हैं उस पर आप ट्रस्ट करें. इंशाल्लाह जो है वो फ्यूचर इज इंशाल्लाह वेरी ब्राइट. थैंक यू. Thank you very much, Fawzan Saab.
Now I will request Mr. Sheikh Shiraz Salim that how do you think that how you can facilitate the student in terms of maybe some seminars, some awareness regarding the industry, some internship or training whatsoever. So just to mention the experts from the industry that recently, like in our university in UT Lahore, we have recently started the undergraduate program in energy system and management as well, which is our recently launched new program from the last year at our new campus Kalasha Kaku. And similarly, we are already running our two different postgraduate programs in master's side. One is the MSc in renewable energy engineering and one is MSc energy engineering in two different campuses. So we have a lot of like capital of the in term of students. So how do you think that you can facilitate them? Thank you. जी UT कालाशाह काकू में हमने पाकिस्तान की फर्स्ट एयर कंडीशनर टेस्टिंग लैब लगाई है. इट कॉस्ट इज अबाउट more than $500,000 और वो पाकिस्तान की सबसे एडवांस एयर कंडीशनर टेस्टिंग लैब है. It is from Odin Systems. दूसरा ये है कि जी how we can facilitate. When I was in LAMS, basically every year for the final year students, वहाँ पे एक जो है वो रोड शो होता है बेसिकली, जहाँ से मुख्तलिफ इंडस्ट्री के लोगों को जो है वो बुलाया जाता है और उनको जो है वो एग्जिबिट वो करते हैं अपने स्टॉल. वहाँ पे ही स्टूडेंट्स बेशुमार थर्ड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होती है. इंटर्नशिप्स पे भी जो है वो रखे जाते हैं. हर स्टूडेंट का अपना इंटरेस्ट होता है, ठीक है, और जो काम आप वो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो ना वो करें तो आप उसमें जो कुछ जितना आगे वो एक्सेल कर सकते हैं और किसी काम में नहीं कर सकते. तो आई वुड रिक्वेस्ट, अब मैं जो है वो इमरान साहब हैव इनवाइटेड मी, डॉक्टर साहब को एक प्रपोजल भी दूंगा कि आप एक एग्जीबिशन हर साल किया करें जिसमें मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के लोगों को, नॉट ओनली एनर्जी सेक्टर तो सबसे बड़ा इस वक्त सेक्टर है पाकिस्तान का, एनर्जी सेक्टर के लोगों को भी बुलाएं, बाकी सेक्टर के लोगों को भी बुलाएं. उनको जो है वो बेशक स्पॉन्सरशिप्स पे स्टॉल्स दें. दे विल सेलेक्ट द पीपल ओवर फ्रॉम हेयर. यहाँ पे तो सिलेक्शन ही होती है. हमने सबसे हाईएस्ट ग्रेड जिसके आते हैं जी वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जाता है. उसमें से भी फिर सिलेक्शन होती है, जिसके हाईएस्ट ग्रेड आते हैं वो यूईटी में आता है. ठीक है, तो बात यह है कि इससे ज़्यादा क्रीम तो और कहीं से इससे अच्छे स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज़ कहीं से नहीं मिल सकते. तो ये एक जो है वो रोड शो होना चाहिए हर साल आप लोगों की तरफ से, ठीक है. तो डेफिनेटली वी विल सेलेक्ट द स्टूडेंट्स और जो है वो उनको दावत देंगे और इंशाल्लाह वो हमारा पार्ट एंड पार्सल बनेंगे. तो इवन इंटर्नशिप्स भी करेंगे. तो दैट इज़ ऑल माई प्रपोजल. सो वेलकम ऑल ऑफ यू. थैंक यू. Thank you very much, Shiraz Saab. So just to add on for your kind information as well, that in UET Lahore, I think more than 5 to 6 large-scale exhibitions hold every year. Like this is our signature event, which is we are holding at the 7th time. Similarly, we have the ICECE. That's again organized by the ICECE every year. We hold, I think, 17th edition of that conference. And similarly, every year we have alumni event as well on the UT platform. Then we have a career fair exhibition. Then the different departments, they also arrange the international conferences and the project exhibitions, and the industrial invitation is a part of that particular. So we will also keep on inviting you and will be following you in respect to that, how we can facilitate better our students. So thank you very much. Thank you sir. But thank you, आपने मुझे मेरे में इजाफा किया. लेकिन मसला ये है कि मेरी ना एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है जो कि एडवर्टाइजिंग कंपनीज को मटेरियल्स प्रोवाइड करती है. तो बेसिकली ठीक है आप इवेंट सारे कर रहे हैं, लेकिन आप तमाम एलुमनाई को इन्विटेशंस नहीं भेजते. ठीक है, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है. आपकी मार्केटिंग बहुत कम है. ठीक है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, थोड़ी सी मार्केटिंग होनी चाहिए. ठीक है, जिससे आप और एटलीस्ट यू हैव द डाटा. आप इनविटेशन तो देखें
आपका इवेंट आपको पता लग जाएगा कि इधर कितने इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, कितने जो है वो लोग आते हैं, और आप एज फार एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न इधर तो कम ही है, जितने लोग इधर से निकले हुए हैं, ठीक है, थोड़ी सी मार्केटिंग में इजाफा होना चाहिए, क्योंकि मैं पहले तो जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही हूँ, लेकिन बाद में मार्केटिंग का बंदा बन गया। नहीं, ये आपकी बात, तो मार्केटिंग वाकई काम है जी, बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त है, एंड आई विल डेफिनेटली रेज योर पॉइंट। हमारे जो एलुमनाई ऑफिस है उनके बकौल तो अभी एलुमनाई इवेंट हुआ था एक माह पहले। ऑनेस्टली मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, टू बी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है। एनीवे, मे बी आई कैन शेयर देयर प्रेजेंटेशन विद यू। देखिए, आपके सामने जो लोग आ जाएंगे उनको जो है वो नहीं करें, डेफिनेटली यू आपका कैन एडवर्टाइज इट, यू कैन, आप उसकी फी रख दें, कोई एक्स्ट्रा रखें, आपका कंसर्न डेफिनेटली वैलिड है। हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंजीनियर अहमद नवीद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, डेफिनेटली वी विल रेज योर कंसर्न टू देम, and we have special alumni office, and in addition to that के UT के alumni chapters हैं in Canada, in USA, in UK. Yes, of course, लेकिन आपकी concern को इंशाल्लाह हम जरूर address करेंगे। Thank you very much. So now I will request one of the most experienced expert from our side, Colonel Saab basically have a huge experience. So sir, how you do you think that you can facilitate our student in different capacities? Thank you. मेरा ज़्यादा तजर्बा तो फौज में काम करने का है, सोलर में तो 7-8 साल हुए हैं, लेकिन यूईटी के अंदर जस्ट आई वांट टू टेल यू कि 1 मेगावाट हमारी कंपनी ने ही लगाया हुआ है, और इसका कंट्रोल रूम बिल्कुल जैसे ही मेन गेट से एंटर आते हैं तो लेफ्ट साइड पे ये कौन सा मेन इलेक्ट्रिकल आपका डिपार्टमेंट है, उसमें है। मैं तमाम स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी आपको 15 मिनट आधा घंटा मिले, आप लाजमी जाकर वो कंट्रोल रूम विजिट करें और ये प्लांट लगा हुआ लाजमी विजिट करें। दिस विल बी द फर्स्ट 1 मेगावाट प्रोजेक्ट जो आप लोग देख रहे होंगे लगा हुआ है, जो राइट वर्किंग इन द यूईटी। जहां तक सपोर्ट करने की बात है, तो पहले भी हमारी कंपनी हर तरह की हेल्प करती रही है स्टूडेंट्स को। डॉक्टर साहब, इमरान साहब, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास भेजते हैं जॉब्स के लिए भी, और कुछ लोगों को रिसर्च के लिए कुछ मटेरियल्स और कुछ चीज़ें रिन्यूएबल के लिए चाहिए होती हैं। तो वी आर वेरी ओपन, और हम हर तरह की हेल्प करते हैं। एंड इफ समवन हैज़ अ वेरी गुड आइडिया तो हम फंडिंग भी करते हैं। चंद एक स्टूडेंट्स को हमने फंडिंग की है, उनमें से शायद यूईटी तो नहीं, कोई लम्स के थे और कुछ और लोग थे। दे हैव अ वेरी गुड आइडिया। तो अगर किसी के पास अच्छा आइडिया है और अगर किसी को वाकई ही एक वो अर्ज है टू लर्न, वी आर अवेलेबल, ऑलवेज अवेलेबल। हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 300 से ज़्यादा मेगावाट तो हम लोग इंस्टॉल कर चुके हुए हैं। तो आप लोग किसी साइट को विजिट करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली यहाँ काम हो रहा है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स पता चलती हैं। academically things are different and in practically things are entirely different. So our company is always we will welcome, और especially it will be an honor कि अगर UET का कोई स्टूडेंट आ रहा हो तो बात करते हुए भी दिल को एक खुशी हो रही होती है कि ये पाकिस्तान की क्रीम है, ये वो बच्चे हैं जो टॉपर्स हैं, और जो टॉपर होता है वही यूईटी में आता है। और फिर जो यूईटी का स्टूडेंट, मैं तो जहाँ कहीं पर कोई इंजीनियर कोई मुझे यूईटी का नाम ले लेता है तो सर्टेनली पहला ही मेरा इंप्रेशन उसके लिए बड़ा एक वेलकमिंग और दिल में एक रिस्पेक्ट होती है। तो सर, सोलर टेक के बिहाफ पे मैं आई गारंटी कि अगर किसी स्टूडेंट के पास कोई अच्छा आइडिया है, उन्हें हमारी हेल्प चाहिए, वी आर वेरी ओपन। सर, थैंक यू वेरी मच, रियली अप्रिशिएटेड। कर्नल साहब के साथ मैंने लास्ट ईयर भी सेशन किया था और इसी तरह के हौसला अफजा, हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात होती है कि इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स जो हैं वो आके इस तरह से अप्रिशिएट करते हैं। सो ऑन द सेम साइड हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको किस तरह से हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है ना वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि ताकि वो वहाँ जाएँ और वो इसी तरह जो प्राउड है इस इंस्टीट्यूशन का वो मेनटेन रहे। सो इसी
continuity में I will request Dr. Ali Hussain Kazim to shed some points that how do you think कि जिस तरह से हम इंडस्ट्री से बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं to facilitate our student, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करें? क्या आप समझते हैं कि चीज़ें स्टूडेंट्स के एंड से वो होनी चाहिए जो कि अभी शायद थोड़ी सी कंपैरेटिवली लैग कर रही हैं? थैंक यू. Thank you for that question. In my current capacity as the Director of Automotive Engineering Center, my job is to groom the students of automotive engineering in all the three aspects: cognitive, their thinking ability; psychomotor, how they work with their hands, are they hands-on; and most importantly, affective domain. Are they forthcoming? Do they take new initiatives without any hesitations? So each of these three aspects, I'm trying to groom, like my team is trying to groom them in all the three areas, and we want them to be market ready so that inshallah, they work for the best companies of the world. Pakistan automotive industry is growing, and so is our department. This year, we'll be offering all the three degrees, BSc, MSc, and PhD in automotive engineering. It's the only place in Pakistan offering all the three degrees. So I see that there are a lot of students over here who are not from UET. So I welcome that you consider UET and you consider automotive engineering. Thank you. Thank you very much, Dr. Ali. So I may have only one question from the audience. If you think so that there is any question from the experts, so may I request आप ये माइक प्रोवाइड करेंगे उधर? Thank you so very much. My name is Sharaz. I'm representing University of Punjab Energy Engineering Research Development Center. Sir, जिससे क्वेश्चन हो उनका जरा. Sir, it's been a very useful talk to hear across the board being mentioned on at least 3 or 4 different avenues. My question is, when we talk of the solar, let's say, unit of cost of production, is there any possibility that from energy policy point of view and from production and manufacturing point of view, you can build in the penalties which countries like Pakistan are already paying in terms of capacity payments being interlocked with the IPPs. So is there any particular point which can be built in from the solar sector point of view to address that issue? Because until and unless that issue is resolved, we are still going to be in the same bottleneck. The bottleneck is that we have the generation capacity, we have the installed capacity, issues are on the dispatch side, but there is another issue, and that issue is like kind of an elephant in the room, and nobody actually mentions that. How can we build in terms of the futuristic energy policy, so that those IPP penalties can be shared burdened either by the companies or being subsidized by somehow by the government? So I would like the expert to please give a food of thought on that. Thank you. Sir, this is really very thought-provoking point which you have mentioned, and very good point. कि सर ने ये कहा है कि हमारे साथ सबसे बड़ा इशू ये चल रहा है, चाहे हम जितनी मर्जी सोलर पैदा कर लें, हमारा जो नेशनल ग्रिड है वो आईपीपीज पे डिपेंडेंट है. अगर हम उनसे बिजली नहीं भी खरीदते तो हमें उनको पैसा देना पड़ता है. तो गवर्नमेंट तो वहीं पर खड़ी है सर. एम आई राइट सर? यही सवाल है. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और आपने खुद ही मुझे हिंट भी दे दिया कि हमें क्या करना चाहिए, जो कि बड़ा वैलिड पॉइंट है. जब हम सोलर ज्यादा पैदा करने लग जाएंगे, रिन्यूएबल ज्यादा पैदा करने लग जाएंगे, तो हमारे ऊपर लायबिलिटी ऑफ आईपीपीज विल स्टैंड देयर सर. तो हाउ टू सर ओवरकम दैट, आपका यही सवाल है, और उसका जवाब भी आप ही ने दे दिया कि अगर हम यूं करें कि सोलर इंडस्ट्री पे कोई टैक्स लगा दें, और वो टैक्स की जो अमाउंट है वो स्ट्रेट वे उनकी बिल पेमेंट में चला जाए, तो
दिस इज अ वर्केबल प्लान, लेकिन सर्टनली इम्प्लीकेशंस भी हैं। फिर बहुत सारे लोग, बहुत सारी इंडस्ट्री, अगर हम 5% 7% टैक्स लगाते हैं और थोड़ी कॉस्ट ऊपर जाएगी तो वी आर अ वेरी कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट। मैं तो यहाँ पर जब भी लोगों के साथ बैठा होता हूँ तो लोग 20 करोड़ रुपए का प्लांट लगवा रहे होते हैं और वो कहते हैं जी आपने 5 लाख रुपया रेट ज्यादा दिया हुआ है। और क्वालिटी और इन चीजों की बात तो बाद में होती है, पहले तो हम लोग कॉस्ट ही में फंसे रहते हैं। क्योंकि मैं पिछले 8 साल से डेली 5-7 प्रोजेक्ट्स को तो कॉस्ट से रिलेटेड हैंडल कर रहा होता हूँ। तो सर इन हालात में अगर तो हमने गवर्नमेंट को, और अगर एक नेशनल वाइड चीज सोचनी है, तो आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है कि हमारा जो सोलर पे टैक्सेशन है, चाहे वो इंस्टॉलेशन पे है, चाहे इंपोर्ट पे है, चाहे कुछ है, उसका एक पोर्शन या दैट कंप्लीट मनी शुड गो फॉर IPP पेमेंट्स, ताकि गवर्नमेंट डिफॉल्ट भी ना करे, निज़ाम भी चलता रहे और थोड़ा सा कंट्रीब्यूशंस मैं आप वो टैक्स पे करके कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो यही है। बाकी सर यहाँ शेख साहब भी बैठे हुए हैं और डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा ओपिनियन। मैं थोड़ा सा ऐसे ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आई वॉज इन जर्मनी इन स्टुटगार्ट सिटी वाइल प्रेजेंटिंग माई रिसर्च इन अ कॉन्फ्रेंस। तो वहाँ पे एक यूरोपियन गाय था, तो वहाँ मैंने एनर्जी पावर शॉर्टेज की बात की कि जी ब्लैकआउट हो जाता है और इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में। तो ये हुआ सरप्राइज, वो कहते हैं कि 10 माह तो आपका सूरज बरसता है और आप कहते हैं गर्मी बहुत है, और दूसरी तरफ आप ये रोना रो रहे हैं कि जनाब आपके पास जो है ना वो पावर शॉर्टेज है। सो वो कहता है कि मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ मुझे जो बिल है वो नेगेटिव में आता है। वाई कि मेरे घर के जो वो सोलर की रूफ है उसके ऊपर वो गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किया हुआ है और वो मुझे नेट मीटरिंग के थ्रू मुझे गवर्नमेंट उल्टा पे कर रही है। सो दिस इज़ द थिंग कि जो पॉलिसी हैं बेसिकली हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली शायद वो इलेक्शन तक होती हैं या वो अगली IMF की किस्त तक होती हैं, ठीक है, या IMF हमें डायरेक्ट कर रही होती है। सो देयर इज़ अ नीड के इन चीज़ों को जो है ना वो बेसिकली पॉलिसी रेगुलराइजेशन, क्योंकि ऑब्वियसली अल्टीमेटली जो जितनी भी चीज़ें हैं वो होनी तो थ्रू हमारा जो रेगुलराइजेशन है वो थ्रू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है। आप उसे कुछ भी कह लें कि हम जिस जैसे मर्जी सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, बट वी स्टिल नीड टू फाइंड आउट द सोल्यूशन फ्रॉम दोज पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स जहाँ से वो रन हो रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल कि वो हम जो है ना वो कोई नई मैकेनिज्म डेवलप करें। फॉर एग्जांपल IPPs के जो हैं वो रेंट हमने वो कब के वो मुआहदे किए हुए हैं और पता नहीं कब तक हमने देने हैं, ठीक है। सो देयर इज अ नीड के गवर्नमेंट को शायद इस चीज़ के ऊपर, वो वही बात है जो पहला क्वेश्चन भी था कि हमने ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी बेसिकली इन सारी चीज़ों के अंदर, कि हम पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होते। पिछले 16 माह में वो गवर्नमेंट चल रही थी, अभी भी बड़ा वो कन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन स्टिल इन चीज़ों में रह के ही हमने ये सोल्यूशन जो है ना वो फाइंड आउट करने हैं और उनको हमने अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है कि कैसे हम जो है ना वो सस्टेन कर सकते हैं। अब यूरोप में या एडवांस कंट्रीज़ की हम बात करें, ऐसे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 1 या 1.5 माह सिर्फ सूरज जो है ना वो बढ़ता है, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर जो है वो आपकी जो पर्टिकुलरली विंटर ही रहता है और 1 से 1.5 माह, लेकिन उस 1 से 1.5 माह में भी जो उनके पास वो सोलर एनर्जी आती है वो उसको 100% जो है ना वो हार्नेस कर रहे हैं। सो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल जो है इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मेरा ख्याल है कि हमारी UT में और सिमिलरली इन अदर यूनिवर्सिटीज़ भी जो 90% फैकल्टी है, PhD फैकल्टी है, they are from the advanced countries, ठीक है। they have exposure, they know the solutions as well, we have the industry people as well, so there is a need कि इस चीज़ को जो है ना वो प्रॉपरली पॉलिसी मेकिंग में लाना चाहिए और ऑब्वियसली इस चीज़ को गवर्नमेंट जो है वो मेरा ख्याल है बेहतर कैटर कर सकती है। थैंक यू सर। आई विल लाइक टू ऐड जस्ट वन पॉइंट। सर डॉक्टर साहब ने वो जर्मनी का जिक्र किया, तो मैं 2014 में जर्मनी में था और ज्यादातर फौजी अफसर साथ थे, कोई 9 अफसर थे और ये काको रिन्यूएबल एनर्जी है सर, तो उनके साथ हमारा कोई बड़ा प्रोजेक्ट था तो उसकी डिस्कशन थी। तो एक ब्रिगेडियर साहब ने, सर उस वक्त सोलर एनर्जी आज से 4 गुना महंगी थी सर, आज मैं पैनल 15 सेंट पर वाट ले रहा हूं तो उस वक्त 75 सेंट पर वाट था।
और इन्वर्टर भी अकॉर्डिंगली। तो सर एक ब्रिगेडियर साहब ने सवाल पूछा वो काको एनर्जी वालों से कि क्या सोलर एनर्जी जो कि बहुत महंगी है, सोलर प्लांट कॉस्ट इफेक्टिव है? तो वो जर्मन आगे से कहता है कि आपके मुल्क में सूरज मेरे मुल्क की निस्बत कम से कम 30 गुना ज्यादा है। वो उसने सामने फौरन ले आया कि आपके पास रेडिएशंस आर 30 टाइम्स अप्रॉक्स 30 टाइम्स मोर देन जर्मनी। So in Germany, this is cost effective and it is beneficial. So how the hell in Pakistan it is not beneficial? तो सर बात डॉक्टर साहब वाली है कि इसको सही तरीके से यूज करने वाली है, और फिर आपका पॉइंट कि हम IPPs को कैसे हैंडल करें, वो सर कोई टैक्स ही लगाना पड़ेगा और देना पड़ेगा सर, और तो कुछ नहीं है। थैंक यू जी शराज साहब आप। Regarding the IPPs, few years back, we did not had energy. So these IPPs helped us, they gave us energy. So whenever a company comes from outside Pakistan, they want a return on investment, which needs to be secured. So that return on investment is secured in a lifetime of that project. Now maybe we're in a surplus, so maybe now we are in a position to think otherwise. But we need to honor our commitments and we need to find alternate source of energy. So maybe after 40 years, Pakistan would be technology secure and we might be energy secure as well. Thank you. सर ये एनर्जी सेक्टर की बात हो रही है, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर कतर के साथ हमारा 15 इयर्स का गैस का प्रोजेक्ट जो कि LNG का प्रोजेक्ट था, वो अगर कतर कैंसिल कर सकता है आफ्टर विद इन 5 years, देन व्हाई नॉट वी कैनॉट कैंसिल 15 years। $5 से का प्रोजेक्ट उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था, फॉर 15 years दे हैव टू गिव अस LNG एट द रेट ऑफ $5, और उसके बाद जो है उनके कैंसिल करने के बाद वट एवर हैपेंड, आई डोंट गो इनटू द पॉलिटिकल डिटेल्स, ठीक है, देयर वाज अ वे आउट कि वो $15 पे प्राइस जाने पे वो हमारे साथ कैंसिल कर देता है 15 इयर्स का प्रोजेक्ट। तो IPPs, व्हाई कैन नॉट वी कैंसिल द एग्रीमेंट्स विद द IPPs व्हिच आर अप इवन 25 इयर्स बैक, 93 से 96 सबसे पहले IPPs लगे थे जिनमें एनर्जी सेक्टर जिनमें कैपेसिटी के भी जो है वो चार्जेस देना शुरू किए गए। उसके बाद जो है 2008 से 2013 एंड अदर ईयर्स में लगे। दे हैव बीन डेकेड्स। मुझे तो समझ नहीं आती कि जो है वो क्या हम लोग अपने मुल्क के साथ करना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि जनाब दूसरी जगह पे टैक्स लगा के उनकी जो है वो खिदमत करना शुरू कर दें, ठीक है। आप अगर यू हैव टू गो टू द आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं कि जनाब इफ कतर हमारा मुल्क डिफॉल्ट किस लिए किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वी हैव टू पे एक्स्ट्रा। कतर के साथ प्रोजेक्ट कैंसिल होने के बाद कोई हमें गैस देने को तैयार नहीं था किसी भी प्राइस पे, ठीक है। और गैस की रिक्वायरमेंट तो हमारी इतनी ज़्यादा है कि हर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। मेरी एक इंडस्ट्री अमेरिकन टाइल्स के नाम से मैंने तो स्टॉप कर दी गैस की प्राइस हाइक की वजह से, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रही। तो बात यह है कि बजाय कि हम जो है वो जो सस्ते ज़राए हैं उनको जो है वो फ्लरिश करें, उनको जो है प्रमोट करें, उन पे टैक्स लगा के उनका पेट तो कभी भी नहीं भर। फ्रैंकली आप उनका डिवाइस करें, बहुत बड़े बड़े लॉयर्स हैं। अगर कतर 5 साल के विद इन 5 years प्रोजेक्ट कैंसिल कर सकता है 15 years का एग्रीमेंट, देन व्हाई नॉट वी कैन नॉट आफ्टर डेकेड्स वी कैन नॉट कैंसिल। दिस इज नॉट द सोल्यूशन कि जिस पे टैक्स लगा के उनको बहाल कर दिया जाए और सारा जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उनको फिर एक मौका दे दिया जाए, ठीक है। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक। My name is Zaid Ahmed and I'm from ComScience University. This industry academic linkage is one of my favorite topics and I used to think over this, used to discuss this. I had multiple questions but I know the time is limited so I'll go for one only. All of us are actually part of the engineering profession. Whether they are from academia, they are from industry, all of them are part of the engineering community. And every profession has a self-regulation. All of us should have a self-regulated system for our profession. The point is, we usually discuss about whether we should have policies this, the government should do this, but where is the consortium
where we can do this. Means policy never comes out of the blue. You have to make efforts for that. And when you have to make efforts for something, there should be a single platform, not a temporary platform for one or more days, but for actually multiple days, actually for a long term, right? So when you are, if you have a consortium, a body which can take on board both the academia and industry, and we have our vision and mission, and then we go for it, then only then I think we can go for policy and we can say that we can make contributions, a real contribution that our country actually requires. So that's my point. And at the end, I'm very thankful to you, all of the distinguished speakers, the panel members here. Thank you. Thank you very much, Dr. Saab. So with this, we would like to conclude the industry academia session. I hope you all have enjoyed the session and have some positive takeaway from today's session. So just for now, we just need to wait few minutes for the chief guest to come in. Chairman ICECE, Dr. Mukhtar Ahmed is arrived. He has already arrived in the university, and we are just waiting for him to come here, and then we will start the closing ceremony. So I would like to appreciate and thank to all the experts from the academia and from the industry side for sparing their time and have very good insights on the different points related to the industry and academia linkages, specifically in the energy sector. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you very much, Robin. So with this, I would like to clap for all this. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. I'd request everyone to please settle down. और मैं सबसे पहले पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपका इतना इंसाइटफुल डिस्कशन आपने और फॉर सो लॉन्ग यू गाइस टुक क्वेश्चन एंड आंसर्स और इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज जो कि एक नीड ऑफ द आवर है उसके ऊपर आप लोगों ने इतनी खूबसूरती से एड्रेस किया तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और आप ऑडियंस के भी बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें पूछ रहे हैं कि सर रिज़ल्ट कब आएगा। हम आपकी जो क्या कहना चाहिए तिश्नगी है उसको भी समझ रहे हैं, जो आपकी तजस्सुस है कि क्या बना है क्या नहीं बना। तो सबसे पहले तो एक आपसे माजरत के साथ आई वुड रिक्वेस्ट कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर योर ओन सेल्फ, कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं? कितनों को लग रहा है कि वो जीत जाएंगे पोस्टर कंपटीशन? इतने पैसे तो हम नहीं लाए कि सारों पे। अच्छा, आप लोगों में से ग्रीन इनोवेट में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? यू रिमेंबर? कोई ग्रीन इनोवेट वाले लोग हैं तो रेज योर हैंड और मे बी क्लैप। ओके, जो कभी हुआ ही नहीं लेकिन वो भी हमारे हाथ में नहीं था। खैर, आई अंडरस्टैंड आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं बहुत देर से और बड़े पेशेंस से बैठे हुए हैं, तो हम आपके इस पे भी शुक्रगुजार हैं। टू लाइटन द मूड अप जस्ट अ लिटिल बिट, अभी मैं दावत देना चाहूँगा स्टेज पे उमैर फारूक को कि वो आके थोड़ा सा आपको महसूस करने की कोशिश करें। उमैर, कुड यू प्लीज़ कम ऑन द स्टेज? शुक्रिया। अच्छा, आप लोग काफी बोर हो गए होंगे, अगर आप इजाजत दें तो एक दो लाइनें कुछ सुनाता हूं आपको। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, क्लैपिंग साथ। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, है 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया,
जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। थैंक यू। मिक्स कर अभी चूंकि हम मुंतजर हैं चीफ गेस्ट साहब के, तो एक बचपन में हमारा वाकया था कि थोड़े से हम बड़े मजहबी घराने से हैं, बैकग्राउंड पे हम दुनियादार लोग हैं, तो हमारे दादा और नाना जब कभी शादियों में आते थे ना, पहले गाने चल रहे होते थे, जैसे ही वो एंटर होते थे हम कहते थे जी पढ़ो सल्ले अल्लाह सारे। तो अब कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, अभी वक्ती तौर पे हम आपको महसूस करना चाह रहे हैं, जैसे ही चीफ गेस्ट आएंगे तो आप तालियों में कैमोफ्लाज कर दीजिएगा कि उनको ये ना लगे कि यहाँ ज़रा ज़्यादा मनोरंजन हो रहा था। बट एनीवे, मीनवाइल मैं नहीं चाहता कि आपको मजीद कॉग्निटिवली ओवरलोड किया जाए, तो उमैर से ही एक और चीज़, इनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइटम है जिसमें ये एक मेडले और एक मैशअप करते हैं, तो जिसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान की सकाफत का ही वो तर्जुमानी करते हैं। तो उमैर ज़रा वो वाला आइटम आप ज़रा सुनाइए। हेलो। अच्छा, इसमें भी आप मेरे साथ क्लैप करेंगे। मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा ढोला नहीं आया है, मार गई उड़ीक दिन रात दी। आसे डुब के हंजुआ थले सईयों मैनू लग गए रोग अबले, कोई मेरा दिल ते बस न चले की करा। मर चलिया मैं तकदी सुंजिया रावा प्यार दिया है, मार गई उड़ीक मैनू दे तरीक मेरा ढोला नहीं आया है, मार गई उड़ीक दिन रात दी। अले अले मुझा मार बड़ा हाँ मुझा जोगियड़ा मारुदा मिथड़ा मोहेजा मारुदा जोगियड़ा मोहेदा। पहले तो कभी कभी गम था मगर ये दर्द जुदाई है हर घड़ी अब, मगर ये दर्द जुदाई है हर घड़ी अब। लाश पे खबर तक मिस्तूर माला रौड़ा ताजा ताजा गुलुना दे सलोर मारा रौड़ा। मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा ढोला हाँ नहीं आया है। Thank you very much. ये हमें कभी नहीं पता था कि चीफ गेस्ट को हम ढोला भी कहते हैं, तो ढोला साहब का इंतज़ार है। चीफ गेस्ट साहब बस अभी एनी मोमेंट तशरीफ़ ला रहे हैं, तो मौके की मुनासबत से था। और अब हमें भी समझ नहीं आ रही कि हम खाना पूरी कैसे करें, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट बस। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड देता चलूँ। ICECE से आप तमाम स्टूडेंट्स से आई अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि आप इंतज़ार में और थक गए हैं, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मेरी दरख्वास्त है आप लोग इनाम को बेशक मिस कराएं, कैश प्राइज़ है हमारे पास मुनासिब, तो आप लोग यू कैन लीव। हाँ नहीं ठीक है, आप जाना चाहते हैं तो ठीक है जाएं, लेकिन ये है कि अगर नहीं जाना चाहते तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू बिहेव। तो बस अब खाने इसके लिए हमारे पास वकील साहब हैं, वकील साहब यस कहेंगे तो हम लंगर खोल देंगे, लेकिन अभी असल में चूंकि हमारे पास ICECE के आप भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए, हमारे चीफ गेस्ट की आमद हो चुकी है। A huge round of applause, ladies and gentlemen, for Dr. Mukhtar Ahmed Saab, Chairman ICECE, worthy Vice Chancellor UET Lahore, Dr. Waqar Saab, and all the other dignitaries. आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है सर, if you could please join us on the stage. वर्दी वाइस चांसलर साहब भरपूर तालियों में, चेयरमैन ICECE डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, डॉक्टर वकार साहब, I would request if Mr. Robin is here, Mr. Robin Zeng, if you are here, could you please, Mr. Robin has left. Sir, please तशरीफ रखिए जी।
Now with this, we'll formally begin the closing ceremony. और मेरी इंतहाई निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ. For the recitation of Holy Quran, I would like to invite Muhammad Usman Sahab on stage for Tilawat Quran Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. Now, ladies and gentlemen, please rise for national anthem. Meanwhile, I would request Mr. Robin, if you could please come on stage. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, ladies and gentlemen. Meanwhile, I would also like to request Dr. Shiraz Saab, if you could please come forward and sit on the stage. Dr. Shiraz Saab, please, in a huge round of applause. Thank you, sir. So on behalf of the whole university, please allow me to express a deep and heartfelt gratitude to the respectable audience from the prestigious institutes from all over Pakistan. Mashallah, this esteemed gathering does have the potential to create the much needed socio-economic impact. And especially in the energy sector, it's booming. So we're very hopeful that this forum will prove instrumental in finding the common points of interest, creating mutual understanding and collaborations, hence creating a great synergy. So now moving on with the closing ceremony, and to conclude the wonderful day, I would like to invite the visionary leader behind this whole conference, very respectable and very dear to all of us, Dr. Waqar Mahmood Saab, on stage in a huge round of applause. Bismillahirrahmanirrahim.
Very Honorable Chairman Higher Education Commission, Dr. Mukhtar Sahab, Very Honorable Vice Chancellor Sahab, and we have Robin and Shreya Sahab. Thank you very much. We have researchers here. Very good afternoon to all of you. This has been a wonderful 2 days of activities since the chairman has just joined us. For your sake, I will just explain exactly what has happened. This is a conference that we conduct every year, and this is the 7th in a series. So in the area of energy conservation and efficiency, this is an area which is utmost important for Pakistan, especially with the import bill which Pakistan is facing at this time, rising prices of energy. Everybody is facing difficulty. So the conservation and optimization technologies and techniques, they definitely help each individual in those who are sitting here and those who are in households and those who are in offices. So this activity got started with the help of the center, which is Energy Center, that we established in Kalashakaku campus. This is managed by Al-Khwarizmi Institute of Computer Sciences that I direct. So the center was established in 2013, and the idea was to conceive projects of interests to the government of Punjab and across country to define solutions for the energy problems, especially finding optimal solutions for energy issues, going for the energy efficiency and conservation concepts, looking into new avenues, for example, electrical vehicles that are coming up, which are saving energy, especially fossil fuel, reducing the carbon footprint of the country, individual users, and so on. So we set up several labs. So the labs, we started off with the PV systems, photovoltaic systems, validations facility we got set up, which is the first of its kind in the country. Then we have LED light testing facility, energy conservation lab, AC testing lab, motor testing lab, and then we have hydel energy and wind energy. And then we also looked at the coal. This was a different concept, but we looked at coal of Punjab. So this is how the center looks. It is in the Kalashakaku new campus. This is how it looks. We have now integrated a solar wall right on the south-facing front of the center. This wall is not only producing electricity, but it also giving us the cooling load reduction. So we are generating almost, there are large amount of data that we have now gathered. So it is almost 733 megawatt hours that has been generated in the last 6 years of its operations. And it has saved almost 8 million rupees per year for the university. For the campus alone, Kalashakaku campus, it is saving almost to a point that during weekends, it is taking up the overall load of the campus. And we have net metering installed, so there is also injecting energy to the grid and receiving credit accordingly. Then we also installed another solar wall here at the administrative block, and this is again almost 140 kilowatt of its energy generation capacity, and it has generated 600 plus megawatt hours. So then we have solar PV testing facility set up in the center. It is the only and the first of its kind providing validation for solar panels which are imported or produced in the country. And we have helped the government of Punjab and other provinces, including Sindh and Balochistan, in validating their solar panels. So this is the only facility that we have which is operational. And then you will see that there are a large number of customers who have dealt with us, manufacturers, also installers, those who are getting the facilities from us. Then we have, in addition, we have LED testing lights, which is the second area where we have started to put the labeling system. So LED lights are now tested, and it's the only facility in the country which has the C-type galvanometer, which performs the validation of LED lights. These are the equipment which are available there in our center. It is also 9001 certified facility, so it's providing accredited testing. Then we have conservation opportunities specially designed, and we are going into not only just commercial buildings and households, but also going into industry. So with the help of UNIDO, we have gone through the 2 industrial verticals in ceramics and paper and pulp, and we were given the second best consulting firm, providing the energy efficiency and conservation guideline for these industries. So also, again, with the help of Energy Department, Government of Punjab, we have set up AC testing facility, first in the public sector. This is the only facility which tests air conditioners up to 5 ton of energy consumption that can be tested for their efficiency. And then we are also setting up a facility which is going to be testing the motors, electrical motors. So the industry has a largest load which industry has is about 70% of their load is electrical motors. And they are very poor quality that are available in the country. So we are going to then go through a labeling system where we will be able to test these motors and certify them for their efficiency and their label.
Then, sir, we have coal, Punjab coal seams. We analyze them and we make their washability analysis so that how we can utilize it for our own energy generation. Then we also look into thermal opportunities. For example, heliostats using solar thermal heat collection and then generating heat for energy generation or for other industrial purposes. And then you will notice that these are the areas where we have provided facilities all over the country. That includes Balochistan, Sindh, FATA, and then Punjab, various parts of the Punjab, and then KPK, where we have provided services with the help of the center. Then we have academic program. We have a master's in energy engineering that we started off here. And then we also provide vocational training with the help of Punjab Skills Development Fund and also with the help of NAPTEC. Then coming to the conference very quickly so that the chairman is well versed with the conference. This is the 7th in a series that we have conducted this year. We started off with the opening yesterday. We received almost 130 plus papers this year, and about 24% of them, 33, were selected through a technical committee, which is consisting of experts from Pakistan and abroad. And these experts meticulously looked through the papers and then selected only the best quality. So our selection rate is quite competitive. And then we have invited talks, international and local. And then we have exhibition from industry and also poster competition and project competition from students. So it's a myriad of activities that are happening. So students are involved, researchers are involved, industry is involved, and public sector is involved together with the university. These were the sessions yesterday. We started off with the discussions on the energy conservation related topics which were selected by the program committee for invited talks, as well as the papers which got selected. So 2 parallel sessions started off yesterday. They are given here, and they continued after lunch. And then today in the morning, we had sessions, invited talks, and then also papers which are published in parallel. They are shown here. So we had 10 invited talks from across the globe, and then we had also invited talks from locally, from Islamabad, from MUT, which is Mehran University. We had speakers here, and then also from Karachi, and then other parts of the country. And then we had a very effective panel which just took place before we walked in here. This included industry representation, academic representation, and public sector representation. Dr. Farooq moderated it. He's just sitting here. This, in fact, gives the ideas about exactly how we can improve the energy situation of the country from the policy perspective so that we can provide directly a feedback to the public sector, since policy is going to be the most important key element in this whole domain. As far as technology is concerned, there are good researchers, there are good industry, there are investors who are available, but the important issue that we face is the area of policy, where we can get appropriate policy from the public sector institutions, federal level and provincial level. Then so many technologies and so many processes can be implemented that can help improve the energy scenario of the country. So this is main thrust of the conference that we have faced. In addition, since the time is short, so we'll go through some of the recommendations that the panel as well as the invited speakers brought. So these are the industry that came here. So electrical vehicles are coming up. Electrical vehicles, you're quite familiar that these are energy conserving devices which will help improve not only the atmospheric pollution condition, but also it can help conserve energy. The per mileage usage of energy in case of electric vehicle is much less than the regular vehicle. Then we have Max Power. Huawei is here, right, sitting with you. Streaming, Sun Solar, and Solar Tech was available here for the representation, and Sasgar is also demonstrating outside. Then we have a poster session and student competition. The students are here. They are waiting for their prize distribution. Almost 200 plus students participated, 100 plus teams in their posters and research papers presentations. These are some of the glimpses of the activities that happened today. And this is the historical view of some of the conferences that we have that has been happening. So we are very fortunate that you are here today and witnessing the closing of this exercise. We have been inviting the ministers from the energy department as well as the secretary and other public sector which are involved with energy efficiency and energy itself. Punjab Energy Efficiency Conservation Agency and NICA, which is a national agency, were invited during our conferences. We also publish our activities in the form of a newsletter every 6 months, which is called Energy Tech. And then we have
Going through some of the acknowledgements, this conference, in fact, is a result of hard work of a lot of people, a large number of people, especially those who are working with the technical committee, those who are working with the program committee, general administration, looking after activities, putting stalls, helping out industry, helping out students. So there are a number of individuals who participated in helping the conference becoming a success. So it will be hard for me to name everybody here, but they are listed, and I assure you that they are very well acknowledged. Your hard work is acknowledged. We are just going through since we are starting late, so I'm just pushing through the activities. From recommendations perspective, they are invited speakers who gave their solid recommendations for government to follow. We will compile and we will provide these to the public sector, especially from the policy perspective. And from the technology perspective, we got the opportunity to interact with so many researchers from across the country who are conducting very useful and helpful research, which we can have collaboratively move forward, and our center will be supporting it. With these words, I thank you all, and I hope the event has been successful for you. Thank you very much, Dr. Waqar Saab. Now, to give pictures to whatever insights Dr. Waqar Saab told and what it takes at the back end to conduct a conference like this, let's have a video sneak peek and the video highlights of the conference. Space. National anthem. बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था, इसकी ड्राइविंग स्मूथ है, मटेरियल इसका बहुत जबरदस्त है और पिकअप बहुत अच्छी है और थैंक्स ICECE फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और पाकिस्तान को फिलहाल इन गाड़ियों की काफी appreciable that the students had did really wonderful job. The organizers, the main steering committee, and all volunteers who really did great part to make this conference successful. Presenting a paper gives an excellent chance to network with the people, with similar researchers. I'm looking forward to meet and make new collaborations here. Actually, this is a self-balancing robot. It can balance itself on all the edges and vertices on 3 degrees of freedom. What it is doing here is it is reflecting the internal mechanism of a satellite. It can be used in satellites, submarines, spacecrafts, for stabilization and altitude control. Thank you so much. So this is just a sneak peek what it takes to conduct a conference like this. Now I would like to call upon Mr. Robin Singh, who is the Digital Power Managing Director of Huawei Pakistan. In a huge round of applause, ladies and gentlemen. Let's welcome Mr. Robin.
Good afternoon, everyone. This is Robin. I'm from Hawaii, Pakistan. It's my great honor to participate in these panel discussions. Actually, in last year, I also joined this event. It is very useful and necessary for me to learn knowledge, to share my experience, also to participate in such excellent event. I think now in Pakistan, we are suffering a lot in past many years for power supply. I think this platform is very, very important to provide, for our as OEM, provide even some system integrators, even our students and professors in same platform to discuss this topic and share our experience. And also, I really appreciate Dr. Waka and Ms. Imran and all your team in past many years give us a lot of guidance and support in our solar systems. And also in your University UET, I think in past many years, we also jointly provided training and development for a lot of students and installers. So same thing I discussed today. I want to collaborate continually in this year. We want to go for counterwise to share our experience, to share our knowledge to more and more students and all installers. So finally, I want to say again, thank you very much to invite me, and thank you very much to provide this platform for all the engineers, all the OEMs, and share our knowledge. So thank you very much again. Thank you. Thank you very much, Mr. Robin. Your presence made the conference very insightful and worthwhile. Now, I would like to invite Dr. Syed Shiraz Daud Saab, who is the project lead for University of Punjab's 2.5 megawatt solarization plan and director for the Energy Research and Development Center. He's a co-inventor of catalytic additive technology for heat power generation plants, received various international recognition awards. With a huge round of applause, ladies and gentlemen, let's welcome Dr. Syed Shiraz Daud Saab. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you so very much. I know that our chief guests and the worthy Vice Chancellor and Dr. Bakar and Mr. Robin is here. Without taking further more of a time, because I see a lot of anxious faces amongst the students who are waiting to be rewarded, either being the prize winners of the different positions. One thing I'll just add on, CERAD is indeed a shining star for our Pakistan. And I would ask all of you to have a big round of applause for the CERAD team, because they've done a marvelous job. That's pretty much what I wanted to say. There is a lot to say in terms of the energy efficiency, conservation, and sustainability. We, as part of the academia, being working at University of Punjab, at CERAD here in UT, we are collaborating on having this first of 2.5 megawatt installation of a solar plant. Hopefully, we are in the final stages, and at the same time, we are developing new technological solutions. We are taking small steps. I see that Pakistan can only excel if we take first small steps and then see the bigger picture. For us, at this moment of time, taking a big leap might be a little too risky. And here I would conclude. Thank you. Thank you so much, Dr. Shiraz Saab. Now, it is my honor to introduce our distinguished chief guest today, Dr. Mukhtar Ahmed Saab, the chairman of the Higher Education Commission. With a huge round of applause, ladies and gentlemen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Vice Chancellor Dr. Nasir Hayat Saab, Dr. Waqar Saab, Mr. Robin from Hawaii, Professor Saab, मैंने आपका नाम नहीं सुना. Our faculty member, researcher, dear students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good evening. First of all, I'm delighted to see so many people in closing session, basically, mostly in conferences, especially if it is more than one day conference.
And if there is no option of food or dinner available, still so many people sitting there is making a very good example that, mashallah, you are here. I hope you are here to learn and also understand each other. I'm very happy to be here today, and especially this topic is very important and more relevant to Pakistan. बेटा जरा थोड़ा सा अभी मैंने आपकी तारीफ की है तो क्यों चाइनीज के सामने मेरे को रोट खिलवाएंगे तो थोड़ी तारीफ में ही रहने दें मेरी बात सुने गौर से So I just want to put appreciation for the faculty members and leadership of this university that they are doing the regular academic activities, making us proud basically. But this is a very important area which you are delivering today and you are discussing in the last 2 days. Because Pakistan is facing a huge crisis as far as energy is concerned. The cost of energy, the electricity bills, and also it is becoming very difficult. I was talking with Mr. Robin that in a couple of months back when I was visiting China, I met with their leadership in Shanghai, and I requested them to come with a proposal that we need to convert all our education institutions into solar energy system on BOT model so that we should have the sustainable model in Pakistan also. So ladies and gentlemen, I hope these outcome of these type of conferences will be, of course, one of those ideas that whatever we are doing to address this issue. I like the approach of your young faculty member that we need to start humble, we need to start slow. But professors of 75, 76 years are gone. How long we can wait for a real thing, basically? Because I was just looking at these young faces. Believe me, I'm not an engineer, but I'm a teacher, of course. My whole life I was teaching. I was doing only professing job. I have no other experience other than to teach. And now as an administrator, basically. But I was just thinking out-of-box solution. If the center which is created by Dr. Waqar and his people, if that center is giving to me for 6 months and only this room, people with me, I can convert everything you can even dream. So my belief is please get benefit of these young people. They are full of energy. Let's do something real in Pakistan because we have published so many papers, enough publication. We need to have some impact on our society. Our society is suffering, ladies and gentlemen. Everywhere we have I should say, the load shedding, the cost of living is getting very high, the cost of energy is getting out of control, the cost of gas is getting out of control. Even I was looking at this data center we have built for whole Punjab area in Pakistan, of course, but based in UT, mashallah, I'm very proud to see that today. And they have placed a generator there. I asked my team, who is going to pay for this diesel cost if you need this much big generator here? Because I have seen many generators we gave to different universities, even into UET, I think 200 kVAs and a big generators there. But I don't think they have the resources to fill them. So what is the option? And who is going to come up to give the solution to Pakistani society? You people, the professor, the researcher. I was just going through this Iqbal one. उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत कहा किस तरह हुआ कुन तेरा निश्तर तहकीक होते नहीं क्यों तुझसे सितारों के जिगर चाक ये मेरे आपके लिए कहा गया if we are doing some good research we should see some good result and I will urge to Dr. Waqar is a wonderful I personally know him because we are the old buddies. He's a young man but we worked together when he was with ICECE. We were setting up some engineering universities, so you can do it. We are looking for solar panel to some other countries. We can't do this thing ourselves. So who will do it? Let's do it. So my request to engineering university at least is please help this government, these people, give us some real things. We are very happy that Pakistan has started with 850 publication every year. Now we have crossed to 40,000 publication per year. But my people are asking, what have we done for us? Which problem did you solve? Which solution you have provided? I know today is not Friday, I'm not giving khutbah, but in my request to honorable faculty, especially in engineering university, because when I go to any engineering university, you know that in the last 22 years, the maximum investment government of Pakistan through HEC is done on engineering university.
The huge investment as far as the equipment is concerned, infrastructure is concerned, scholarships are concerned, they were given to engineering universities. Now society and the government and the people of Pakistan is looking toward you. They're waiting some results. They're waiting for some products. They're waiting some services which can make their life easy. Let's decide today. We will deliver it. Finland is this much country, this much size. Dr. Saab know it. They produce the maximum those computer chips basically. They are the leader. They are making billion of this thing out of these things. Their budget is more than Pakistan budget. Why can't we do such type of thing? Why can't our universities, they can work together? Our professor was saying the Punjab University and UET want to work together. Please do that. Not only publication, not only for only conferencing, but please some solution to our society. So my request, I want to leave this request because I'm also closing my term as a chairman at ICECE, so I get little frustrated now. What have we done in last so many years for Pakistan? So young people, I can bet you, मैं फिर कहूँगा उर्दू में कहता हूँ मुझे ये कमरा दे दें बंदे जो बैठे हुए इधर दरवाजा लॉक कर दें और हमें उठा के उस सेंटर में ले जाएं जो आपने बनाया सर अगले 6 महीनों में मैं गारंटी करता हूँ अगर या तो कुछ लेके निकलेंगे वरना हम खुद ही निकल जाएंगे कहीं ठीक है तो दिस इज द आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन This is the out of the box solution I'm expecting from you and leaving this. I'm not, Khuda na khasta, don't take it that I'm criticizing. I'm humbly begging you people, please do something for this country. This country is going through a difficult time. And who is responsible? We are responsible. हमें लोगों ने उस तरफ धकेल दिया है जो कभी I'm sorry Robin, I have to speak in Urdu because when we go to China we listen so much Chinese, so you better listen to Urdu also, okay? Thank you. So वो जो इराक की हम कहानियां सुनते हैं कि जब वो हलाकू खान उधर कब्जा कर रहा था तो हमारे लोग चौकों में खड़े होकर बहस कर रहे थे कि टोपी इधर पहननी चाहिए, हाथ इधर बांधने चाहिए, शलवार का पांचा ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। अल्लाह के वलियों, हमारे मसले कौन हल करेगा? इस यूथ का कोई कसूर नहीं है। लोग आजकल कहते हैं ना ये यूथ आजकल बड़े अजीब सी सवाल करती है, इसलिए करती है कि इनको हमने तो कुछ बताया नहीं, सही बात ना, इनको हमने एंगेज नहीं किया। दे आर वंडरफुल पीपल, इसलिए नहीं कि मैंने कोई नारे लगवाने हैं इनसे। हमारे बच्चे बच्चियां पाकिस्तान के किसी से कम नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज ना इनके हमारे, मैं खुद बाप हूं, मैंने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया जो मुझे देना चाहिए था। मैंने समझा मैंने इनको यूटी में दाखिला करवा दिया, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया, फास्ट में दाखिला हो गया, लैपटॉप ले दिया, मोबाइल ले दिया, तो आई हैव डन माई जॉब। नो, दैट वाज नॉट ओनली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिमिलरली माई टीचर आर थिंकिंग कि मैंने 25 स्लाइडें तो दिखा दी इनको और मैंने पूरा कोर्स कवर कर लिया, तो दैट इज एनफ। सोसाइटीज कहती हैं व्हाई शुड आई वरी, आगे से बदतमीजी करते हैं। तो इन बच्चों को जो स्पेस थी, जो मैंने कवर करनी थी, आपने एज ए टीचर कवर करनी थी, मैंने एज ए फादर करनी थी, वो नहीं की। तो आजकल ये स्पेस इस दजाली फितने ने कवर ले ली हुई है, तो जिसकी वजह से ये कंफ्यूज हैं। तो आप इनकी कंफ्यूजन दूर करें, बताएं इनको ग्राउंड रियलिटी, बताएं कि क्या करना है हमने, बताइए कि कैसे पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालना है, बताइए कि इन मसलों का हल कौन करेगा, मैं और आपने करना है। सो आई एम, अजान का वक़्त भी है, शायद कबूलियत का वक़्त भी हो, मेरी आपसे गुजारिश है, मिन्नत है कि छोड़ें ये बाकी चक्रों को, प्लीज पाकिस्तान के मसलों का सोचिए। हमारी सफरिंग बढ़ती जा रही है पाकिस्तान के आम लोगों की, और हम तो आप लाहौर में बैठे हुए हैं, मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ, जरा देखिए तो जाके कि पाकिस्तान के रिमोटस एरिया में लोग रह किस तरह रहे हैं। पीने को पानी नहीं मिल रहा, खाने को अनाज नहीं है, पैसे नहीं है, लोग खुदकशियां कर रहे हैं। आज बिजली, मेरे जैसा, मैं चेयरमैन ICECE हूँ, तो मेरे लिए डिफिकल्ट होता जा रहा है कि अगले महीने का गैस का बिल और बिजली का बिल कैसे दूंगा। तो व्हाट इज, हु इज गोइंग टू प्रोवाइड अस द सॉल्यूशन? प्लीज, इकबाल ने आप मेरे लिए कहा था, क्यों हुआ तेरे कुंदे निश्तरे तहकीक। तो इस तहकीक को उस तरफ मोड़िए जिस तरफ जरूरत है, और हमें पाकिस्तान को सॉल्यूशन दीजिए, मसलों का हल दीजिए। दिस इज व्हाट आई विल लीव फॉर यू। आई होप नो पर्सन हैज टेकन इट पर्सनली, एंड बिलीव मी, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यू और UET or any other university, criticizing myself. This is the second time Allah subhanahu wa ta'ala has given me position of chairperson. This means I have done something wrong, otherwise we should have not be facing this problem.
आइए मिल के आज अहद करते हैं कि हम मिल के ये बिल्डिंग है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, तस्वीरें, पब्लिकेशन, सीवी मोटा करना, प्रोफेसर हो जाना, टेन्योर ले लेना, ये सेकेंडरी चीजें हैं. प्राइमरी थिंग इज व्हाट हैव वी गिवन टू दिस सोसाइटी. वो कहते हैं ना, दर्द दिल के लिए काफी थे वो फरिश्ते, तो इबादत के लिए सारे. तो अल्लाह ने इंसान को बनाया कि आपके मेरे अंदर दर्द होना चाहिए कि मैं अपनी सोसाइटी को, अपने माशरे को, अपने बच्चों के लिए क्या पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ. आइए मिल के कोशिश करते हैं. कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का चिराग जलाना होगा. पाकिस्तान जिंदाबाद. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप मेरी बात का थोड़ा सा कहीं से असर हो गया. मैं समझूंगा कि मेरी आखिरत संवर जाएगी. बट एनीवे, डॉक्टर बुखार, थैंक यू वाइस चांसलर साहब फॉर दिस ऑनर. आई नो वाइस चांसलर साहब mentioning that one of your student has won the challenge award of $35,000. Please let me know who is that person, or if you are not getting resource money, I'll guarantee you, inshallah, very soon you will get it. Thank you very much. बहुत खूबसूरत गुफ्तगू, और जो दिल से बात निकलती है वो असर लगती है. तो सर की खुलूस नीयत और इतनी खूबसूरत इंसाइट्स के लिए एक दफ़ा फिर से भरपूर तालियों की दरख्वास्त है. अब वो घड़ी आ गई और इंतज़ार का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है. और ऐसा है कि आई वुड रिक्वेस्ट द वर्दी गेस्ट इफ यू कुड प्लीज स्टेप फॉरवर्ड फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी. एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट सारान. Please come on stage and proceed with the distribution ceremony. Thank you. Sir, please, downstairs. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for your presence here. I would like to extend my gratitude our esteemed guests, organizers, judges, and volunteers. And without any further delay, I will request okay, they are already on the stage. Okay. I will invite the organizers to please come on stage and receive their souvenirs. Mr. Imran Ali Shah, please come on stage and receive the souvenirs. Mr. Kashif Bashir, Shahid Zulfikar, Umair Waheed, Amar Yaqub, Qazi Kandir, Muhammad Usman, Sayyid Mustafa, Aruj bint Tariq, Samra Sattar, Razia, Komal, Hamza, and Muhammad Usman. Now I would like to invite Mr. Hamza Ihtisham, Chair IEEE IAS Lahore Section, to please come on stage and receive souvenir. I will request Mr. Hamza Ihtisham, the chairperson IEEE IAS Lahore Section, to please come on stage and receive the souvenir. Dr. Amir Naeem,